Anurag is going to call. Tails is the call, and heads it is. So HSBC has won the toss, and you have selected to bowl. Any specific reason choosing to bowl? Nothing, it's the first match of the day, so I guess the wicket should play a bit slow. It is cricket, that's the only reason. All the best. टॉस आप जीता है तमोजी ने और आपको पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है और शायद उनको ये लग रहा है कि इस पिच पे थोड़ा सा शुरू में फायदा मिल सकता है गेंदबाजों को क्या लगता है आपको Actually, I wanted to bat first. Reason being, wicket looks a bit, patches are there. So I feel in the second innings it will be difficult for the batter to hit the ball and middle the ball. So that's why I thought, bat first. आप टॉस जीते तो भी बल्लेबाजी करते हैं Yeah. कितना स्कोर देख रहे हैं यहाँ पर एवरेज स्कोर 180 190 के आसपास बनता है I believe it should be everything above 160 is all good. 160 आपको लगता है कि डिफेंडेबल टारगेट रहेगा Yes. चलिए लेट्स देखते हैं आज रिटर्न टॉस के बॉस बने हैं एचएसबीसी के कैप्टन तमोजीत और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त टॉस के बॉस कैप्टन एचएसबीसी तमोजीत को इस वक्त रिटर्न की तरफ से ये डीओ के साथ आज टॉस के बॉस बने हैं इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ में दोनों कैप्टन एचएसबीसी और कैप्टन डेल हमारे साथ अंपायर अश्विनी कुमार पीसीएल के ऑर्गेनाइजर सचिन गुप्ता के साथ मैं यूनिवर्सिटी के अपने साथी कमेंटेटर मयूर बल्ला के साथ चलता हूं सीधा मुकाबले की ओर अब से 5 मिनट के बाद पारी का आगाज होगा टॉस जीता है एचएसबीसी के कैप्टन तमोजीत ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया क्या कहेंगे ये टॉस कितना इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर टॉस जीतकर एचएसबीसी के कैप्टन ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है Yes, I think they have done a very calculative risk on this. Probably it's a good decision, I'm sure, but I'm a little unsure of what the bowling lineup looks like. But I'm sure they will try and pick up some early wickets. And the opposition, I'm sure, looking at the pitch, they might just think they might also should probably just look, to win the toss. But the toss ka boss is the man in blue and red. So बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि टॉस का बॉस बने हैं एचएसबीसी के कैप्टन तमोजीत और उनके जहन में शायद ये बात जरूर है कि यहाँ पर शुरू में जो कंडीशन है मॉइस्चर है नमी है ऐसे में तेज गति के गेंदबाजों के साथ स्पिनर्स को भी मदद मिल सकती है तो शायद उनके जहन में ये चीज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये जो उन्होंने फैसला लिया है it's going to be very, very interesting, I would say. Looking at the last few matches, last week's matches, I'm sure there have been average scores of around 140, 150, and teams who have batted second, they have also been able to successfully, chase it. Defending a target is one thing, but again, chasing is another. So chasing is going to be a very crucial aspect. What do you think on chasing? Actually, you have seen most of the matches being played here with your Hindi commentary. I was more on the third one. So what's your take on the team chasing second? मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है डेल के कैप्टन को अगर डेल यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करती है 170 के आसपास स्कोर खड़ा करती है तो एक डिफेंडेबल टारगेट रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अभी तक खेल चला है पूर्व में अगर आप देखें मुकाबलों पे नजर डाले 180 190 स्कोर होता रहा है और ये बल्लेबाजी के अनुकूल ये विकेट होता जाएगा शुरू में जरूर थोड़ी सी कंडीशन गेंदबाजों को फेवर करती है लेकिन कुछ घंटे के बाद कुछ मिनट के बाद कह सकते हैं कि यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए चीजें बेहतर रहती है और एक बड़ा हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलता है तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग अगर दिल के ओपनर्स अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज शुरू के आधे घंटे अगर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोर हो सकता है Yes, you're bang on with your thoughts actually, and getting a good score because I have also seen initially, the bowlers getting help with the seam. The sun is beating down very well, but they have been able to take the wickets. I have seen the ball hasn't risen too much, but that has also enabled both the batsmen to pick up runs also on the board, and
So as you have rightly said, partnerships are also very important. What I've seen, crucial partnerships. We have seen some very good half centuries. We yet to see yesterday, last week we were about to see two hat tricks actually. So bowlers have also done some, very good job with the ball. But I'd love to see a century probably. There's some very good hittings. Some lovely fours, gorgeous sixes, but yes, all the teams that I've seen till now playing till last week, everyone has done very, very well. So जैसे कि आपने जिक्र किया यहाँ पर लास्ट वीक के, तो मैं आपको बता दूं नितिन भारद्वाज ने इसी मैदान पर आखिरी वीक में जो संडे को मुकाबला हुआ था, नितिन भारद्वाज ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी और उससे पहले यहाँ पर एक शतक भी लगा था शनिवार के दिन, आज ही के दिन। पर आज डेट बदली है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए ओवरऑल यहाँ पर बल्लेबाजों को काफी आनंद मिला है और एंजॉय किया है बल्लेबाजी को। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों के लिए भी पॉसिबिलिटीज रहती है, क्योंकि शुरू में जिस तरीके से मैंने कहा कि कंडीशन है, शुरू में जरूर नमी रहती है, बॉल नहीं रहती है, ऐसे में गेंदबाजों को भी बहुत मदद मिलती है। तो शुरू के आधे घंटे जो है वो काफी अहम रहने वाले हैं और इस पे नजरें रहेंगी हमारी भी, क्योंकि अगर डेल के ओपनर्स टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अगर आधे घंटे अगर अच्छे से खेलते हैं तो एक हाई स्कोरिंग मुकाबला 200 के आसपास स्कोर बन सकता है। जिस तरह की आप देख सकते हैं यह आउटफील्ड बहुत ही खूबसूरत है, बहुत तेज नजर आ रही है, हरियाली है मैदान पर, आउटफील्ड बहुत ही अच्छी तेज नजर आ रही थी, जिससे बाउंड्री के बाहर गेंद जाने में ज्यादा समय नहीं लगता। yes, I'm sure the last line that you have said, that boundary के बाहर जाने ज़्यादा time नहीं लगता. I'm sure this last green outfield, the batsman must be actually probably tempting to go out there, play them beautiful cover drives, the on drives, the straight drives. Yes, I'm sorry, I missed out on the century. And I've also seen, a score in excess of 220, I think 240, if my memory serves correct, in round number three. We saw two beautiful half centuries. But yes, I was forgot the opponent, but they also almost chased down around 160, 170 on the same pitch. The very next match, the team produced 240 runs. So coming back to this field, yes, the outfield looks very nice, and we have again seen up the branding boards coming. I think that the look and feel of the whole complex is going to be very, very nice, and that will definitely encourage both the teams to go out and play some very formidable game of cricket. As I mentioned before the toss, that both the teams, they have very good commentary, both Dell and HSBC. I'm sure in the past seasons also of the editions of this Dafa Pro Corporate League, they have also faced each other, and probably they might be having some familiar faces. अगर आप देखें, अगर यहाँ पर इन दोनों टीमों का अगर आप यहाँ पर खेलने का जो अनुभव रहा है, अगर उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेल जरूर थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाली टीम है, क्योंकि यहाँ पर पिछले कई सीजन से लगातार ऑफिशियल में पार्टिसिपेट करती रही और अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो यहाँ पर इनका इस मैदान पर खेलने का जो एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं वो जरूर उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ की कंडीशन से, यहाँ की आबो हवा से, हर चीज से वाकिफ है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर आप डेल की टीम पे अगर आप नजर डालेंगे तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज काफी बेहतर है। अगर ये शुरू में अच्छा करते हैं तो मिडिल ऑर्डर के लिए काम आसान रहेगा। तो कुल मिलाकर के एक तरफ एक्सपीरियंस है। एचएसबीसी की टीम की बात की जाए तो इनके पास बैलेंस टीम नजर आती है, और एक जब टीम के पास अब बैलेंस होता है तो फिर किसी भी टीम को मात देने की सलाहियत रखती है। तो मुकाबला बहुत ही रोमांचक हो सकता है, जिस तरीके से दोनों टीमें हैं। Yes, it's going to be a very good romance between the bat and the ball. I'm sure. It's the T20 season. The IPL is going on. There's some very good cricket. Delhi Capitals won yesterday. I was actually telling the captain Tomojit. I'm sure I'm spelling it right again. They actually look like Delhi Capitals out there, and I'm sure the inspiring win yesterday. Played very well. A good knock by Rishabh Pant again. He has come back to cricket, and he has taken cricket like duck takes to water, and they have done very, very well. I'm sure. It's a season of cricket, T20 cricket, nice weekend cricket coming up, and should be more teams coming up to this league. I'm sure they'll be inspired to see both the teams, and then coming up they'll know, as you've earlier mentioned also, the last green outfield. You have already seen the pitch. So as the sun keeps beating down, as we go progress towards the day, towards the afternoon, I'm sure it will be probably more towards the batsmen, gaining some more runs for the side. बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखें, अगर जिस तरीके से आप यहाँ पर मैचेस हुए हैं पूर्व में, अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि 170 180 के आसपास स्कोर हो सकता है, क्योंकि पिच धीरे धीरे सूर्य की किरणें इस पे पड़ रही हैं और ये विकेट थोड़ा सा सख्त होता जा रहा है। जितना
समय आगे बढ़ेगा। ये विकेट बल्लेबाजी के अनुकूल होगा और हमें लगता है कि 170 180 आज इस मुकाबले में बनने चाहिए। You've hit the nail in the coffin, actually, Anwar. And that's what 180, 1 and probably 200, as you have actually told. I can see the cheeky smile on your face. Ek hasi ki jhalak. I am sure probably I won't be surprised if probably in this match itself if you see something around 180 or 200. Yeah. और मैं बुलाना चाहूंगा अब एचएसबीसी के कैप्टन को उनके खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे और मुकाबला शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। दोनों इधर डिल्स के ओपनर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज 11 पारी का आगाज करने के लिए और इधर एचएसबीसी के कप्तान तमोजीत अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में। आप देख सकते हैं दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग और इस टूर्नामेंट के प्रायोजक, उसके अलावा केईआई बार एंड केबल्स, एसजी बिलीव वी कम, वी जॉन ग्रोमिंग इंडिया इस टूर्नामेंट के प्रायोजक है, स्पॉन्सर है। थैंक यू सभी को। और यहां पर इफ्को पूर्ता साहबकारी स्वामित लगातार इस टूर्नामेंट में दिग्गज टीमों की आमद रही है, पर यहां पर कैप्टन तमोजीत प्लीज। आप देख सकते हैं हर्डल में बातचीत चल रही है, क्या रणनीति तो हो रही होगी, रणनीति पर किसको लेकर चर्चा चल रही होगी मयूर? I am sure you must be saying, look, this is a very fresh wicket, probably being prepared. We already seen the roller being, walked over it, and the batsman, the opening batsman, I'm sure he'll have the honor. So that's the strategy here, to go and acquire runs because T20 cricket, just at the blink of an eye, can, just finish off. So the moment you try and inhale probably the first few overs, runs or wickets can just go off. You can have some runs in the kitty. So the strategy, I'm sure, from both the teams, especially from the batting side, if I have to talk, will be to not only get runs, stitch some very good partnerships because partnerships are also important. I've seen, for example, the match between Tata Communications, and the Optum Gurgaon, if I'm correct. Tata Communications, they were doing very well in the middle of. Suddenly, there was a flurry of wickets which just went down, and they just lost the match. And it was surprise, how Optum Gurgaon, but they came in the match, they won it, and at one point they actually snatched defeat from the jaws of victory. बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से आज मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल की टीम में क्या बातचीत चल रही है। लगातार आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, रणनीति पर काम चल रहा है, किस तरीके से इस मुकाबले को जीतना है, उन सभी पहलुओं पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। और लगातार कैप्टन के साथ में एक्सपीरियंस खिलाड़ी बातचीत कर रहे हैं और उधर कैप्टन तमोजीत के खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं मैदान पर उतरने के लिए। आप देख सकते हैं हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और शुरू में जिस तरीके से मौसम है, अगर आप देखें मौसम पे भी अगर आप नजर डालें, शुरू में हल्का सा हवाएं चल रही है, नई बॉल से गेंदबाजी होगी तो शुरू से जरूर थोड़ी सी गेंद स्विंग होने को देखने को मिलेगी। Yes, I was actually seeing at the trees. You see the trees are dancing to the tunes of the winds, and I'm sure that will allow, to place the field correctly towards the wind, depending on the left arm or the right one. Captain Tomojit, I'm sure he'll have some easy answers probably in the beginning. With it's not a very windy morning, but I'm sure the wind will pick up. I've seen in the last few matches that the wind definitely picks up. Post 12 or 1 o'clock. अगर आप देखें आखिरी वीक में जो मुकाबले हुए थे उसमें तेज गेंदबाजों की अपेक्षा स्पिनर्स काफी हावी नजर आए थे। जैसा कि मैंने देखा था इस मैदान पर भी तेज गेंदबाजों को काफी मार पड़ी थी और स्पिनर्स को विकेट मिली थी। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर देखना होगा कि आज तेज गेंदबाज हावी रहते हैं या फिर स्पिनर्स को एक बार फिर से ये पिच मददगार रहेगी। Yes, we actually forgot how the spinners can play a very crucial role. But actually, on ground number 3, I've seen the spinners being taken to the cleaners. I remember one batsman, Puneet. The last match, he hit 4 balls for 4 sixes of the spinners. So spinners, yes, they have definitely helped to reduce the run rate. But I'm yet to do commentary on ground number 1. You have more experience on ground number 1, and I'm sure you must have seen the kind of aankho dekha hal for all these spinners and all. So what's your take? How much is the percentage of spinning versus the pacers? देखना होगा कि अगर यहाँ पर
स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर कितने हैं इनके पास और राइट आर्म स्पिनर कितने हैं, और ज्यादातर यहाँ पर जिस मुकाबले में अगर आप नजर डालेंगे तो लेफ्ट आर्म स्पिनरों की काफी बेहतर गेंदबाजी रही है और उन्होंने विकेट चटकाए हैं, राइट हैंड बैट्समैन को काफी परेशान किया है। तो काफी इंटरेस्टिंग रहता है यहाँ पर स्पिनर्स की भूमिका। दोनों टीम के कैप्टन से चाहूंगा मैं, प्लीज। प्रोटीन पार्टनर स्पॉन्सर मैक्स प्रोटीन इस टूर्नामेंट के प्रायोजक है दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग सीजन 11 के प्रायोजक, उसके अलावा वीजॉन ग्रूमिंग इंडिया, एसजी बिलीव वी कम, इफको पूर्णता साकारी स्वामित्व, केआई वारन केबल्स इस टूर्नामेंट के प्रायोजक, जिनकी वजह से यह टूर्नामेंट बुलंदी के शिखर पे जा रहा है। आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा। और And we're going to play historic season 11 of this Dafa News Pro Corporate League along with our other sponsors, KI Wise, IFCO, and Vision, Tosca Boss. They all along have done a commendable job to form partnership, and we'd also love to thank our organizer, Mr. Sachin Gupta, also. He's done a fabulous job. It's never easy when you work in tandem along with the umpires, the groundsmen, of course us also, and it's never easy. For the past 11 to 10 years, he has done different editions, Mr. Sachin. So huge applause to him also. It's never easy. It's a tiring job. After the weekend, we'll go back to your places. But from Monday, जिस डेडिकेशन के साथ पीसीएल को ऑर्गेनाइज किया है, लगातार बेहतर चीजें नजर आई हैं और आप देख सकते हैं एसजी की गेंद इस टूर्नामेंट के। थैंक यू कहना चाहूंगा एसजी को। I request Captain Tomojit. We need to select the ball, please. Captain Tomojit. और एसजी की बॉल आप देख सकते हैं। Okay, great. Thank you. कैप्टन अनुराग डेल के कैप्टन और अपने बॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छी क्वालिटी की गेंद है एसजी की और आज मैदान पर best SG ball, I'm sure. And SG has produced some historic series also. I'm sure the pink ball series in India, it was done by SG, the team. I've seen so many videos. Recently, I've seen some good players also being associated with SG. And our very own Smriti Mandhana, I was going through this entrance. It's so good to see women cricketer, apart from, Rishabh Pant and other people, so you can see the SG ball. Probably you can just held up to the camera. अच्छी क्वालिटी की गेंद है और बहुत ही विश्वसनीय गेंद है। If you can zoom in. और एसजी का चाहे आप बैट इस्तेमाल करें चाहे बॉल इस्तेमाल करें, बहुत ही विश्वसनीय है और ज्यादातर खिलाड़ी इसका इस्तेमाल करते हैं और आपको बड़े मैचों में देखने को मिलता है। तो आज एक बार फिर से दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग में एसजी ने अपनी हिस्सेदारी दिखाई। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा इस तरह की दरिया दिली दिखाने के लिए और इस टूर्नामेंट में अपनी सहभागिता के लिए। Yes, right. And it adds value, to any tournament when you have, these great partnerships coming on. SG is a very renowned brand, like we have the other, I don't want to name other brands, of course, like SG is a very formidable brand and everyone really appreciates it. The scene, the movement, and I'm sure there's no complaints on that. And I'm sure going ahead all the seasons, SG will form a very good partnerships with Pro Corporate League. And of course, the other partnerships also, V-Zone, Grooming India. I'm sure our cricketers will become very stylish after winning the toss when they go back to the pavilion. I have lost a little bit of hair, Anwar, but I'm sure, V-John probably might have some mechanism to, make my hair regrow. I don't know. बिल्कुल V-John आपको स्टाइलिश स्मार्ट बनाने में कोई कोई कसर छोड़ता नहीं है और आज स्मार्ट इंडिया भी बन रही है। Yes, तो उसमें विजॉन की भूमिका काफी अहम है और केआई वायरन केबल्स, जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इनके तार, इनके वायर्स का इस्तेमाल होता है। बहुत ही विश्वसनीय ब्रांड है केआई वायरन केबल्स। और आपको पता है जिस जमीन पर खड़े हैं, इस जमीन पर जो हरियाली नजर आ रही है, इफ्को की बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत ही विश्वसनीय रहा है, किसानों के दिलों में राज करता है इफ्को का ब्रांड, इफ्को पूर्णता साकारी स्वामित्व।
Yes. इन How सभी can की you? भागीदारी ने इस टूर्नामेंट में चार चांद लगाया है. Yes, yes. If got the brand, you can see the background is green. As you mentioned, Haryali, the last green outfield, the green. But we और cannot negate that, of course. जो हमारे आपके अंदर ऊर्जा का संचार नजर आ रहा है, जो एक्साइटमेंट नजर आ रहा है, जो चुस्ती फुर्ती नजर आ रही है, प्रोटीन पार्टनर स्पॉन्सर मैक्स प्रोटीन की वजह से है. Yes, तो I'm यहाँ sure पर we'll have some maximum protein in max protein. I'm sure it'll give us more impetus to do some good commentary and also good impetus for the cricketers to perform, to hit some long sixes. Probably if they can create a difference, I'm sure it will be for max protein. तो चलते हैं मुकाबले की ओर. कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है. यहां से चले हैं एक नई मंजिल की तरफ. ये तो एक पन्ना था, भी पूरी किताब बाकी है. मैं अपने साथी कमेंटेटर मयूर भैया के साथ चलता हूं, अपनी कमेंट्री टीम के साथ. मुकाबले का लाइव प्रसारण शुरू हो चुका है और इस मुकाबले को आप देख सकते हैं. एक तरफ है टीम डेल, दूसरी तरफ है एचएसबीसी. दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत के साथ अपने अपनी अभियान की शुरुआत करना चाहेंगे. तो चलते हैं. Yes, let's go, Anwar. Thank you so much, and we'll be set in action for the first ball very soon. तो अभी तक आपने देखा कि यहां पर टॉस हो चुका है और टॉस जीता है एचएसबीसी ने और गेंदबाजी करने का फैसला किया है. मैदान पर पूरी टीम ब्लू जर्सी में नजर आती हुई, बहुत ही अच्छा खुशनुमा वातावरण. कैप्टन तमोजीत की अगुवाई में एचएसबीसी मैदान पर उतर चुकी है. आज टॉस के बॉस बने हैं, रीजॉन टॉस के बॉस. तो पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है डेल को. The field is set, and very soon we'll be having the live action. It's Dell versus HSBC in this lovely PCL Sports Complex here in Noida. Two great teams. I'm sure the history will speak of lot of good partnerships, bowling, batting, all in very healthy state. I'm sure the scorers will be up in action to input some new statistics on to the columns of the batsman, the wicket keeper. Don't forget, play a very important role. कहाँ से करेंगे? हाँ तो लिंक कैसे करूँगा? इसको कहाँ देखूँगा? बॉलर्स ने प्लीज भाई अंदर एम्पायरों के पास वॉकी टॉकी है. The field is set. The wicketkeeper doesn't have any company. There is no slips, there is no forward short leg, there is no backward short leg. Probably try and create some pressure initially, but batsman in action won't complain about it. There is a third man. There is a mid on. There is a mid off. All set in action. We have also the lovely sponsor boards which have added to the look and feel of this ground one of this Asian Sports Complex. So watching Dafa News Pro Corporate League Season 11. नवीन है, ये बैटन हो गया. ठीक है दादा. वॉकी टॉकी किस पे है? बता दो भाई अपना. बॉलर पढ़ना. So Pranav has the ball in his hand. Shot the strategy to try and wake up the batsman.
Gainers of wickets. Here is the first ball. Hsbc action, he plays very well over the extra cover and onto the boundary for a handsome half a dozen, 6 runs to start off the proceedings here for Dell. I'm sure Hsbc bowler must be surprised, Pranav. This probably wasn't what was expecting at the very first ball, and didn't come right to the pitch of the ball, but he swung it very well and onto the boundary for 6 runs. What a good start here for Dell. They definitely have done their homework very, very well here versus Hsbc. And why not? First ball has showed the clear intentions of the batsman. यार यहाँ यहाँ दिखेगा कुछ यहाँ दिखेगा पेड़ है कहाँ बैठा रहे हो Here's the second ball. वो तार खुला हुआ है और करंट लग गया मर गए ना मेरी जिम्मेदारी नहीं Outside edge है towards the man at अरे भाई है भाई यहाँ तार third man. Will rotate the strike. Will get a single. Third ball from Pranav. Plays it very well. Confusion in the middle, but the striker would negate the run. The score would remain on 7 for no loss. Played it very, very soft, and last to last ball also you have seen the way he has angled his bat towards the man at third man. Rotated the strike. He was trying to repeat the stroke. The other batsman. संचित So Sanchit yet to get off the mark. Dell have started off very, very beautifully. 7 for no loss. Here is the fourth ball. In the air, there is fielder, but we just fall between the two fielders. Will get off the mark, Sanchit. Rotating the strike is also very, very important. We have seen this couple of runs, the singles, they play some very, very crucial role in this, especially in this shorter format. This is the Dafa News Pro Corporate League. Huge partnerships you have seen in the past. I'm sure this would be no different. Here's the fifth ball from Pranav. On the leg side, middle and off leg. Little bit slower in the air. Nice breeze going that what me and my commentator Anwar, we have also discussed in the middle that the swing bowler will try and execute the same position in the direction of the wind, and probably that's what he is trying to do, Pranav. And exactly probably not the length, but it was very much fixed on the middle and leg. Here is the next ball from Pranav. He has to re-bowl that. Probably didn't get his counting right on his footsteps. अरे बैट्समैन का नाम कहाँ है And trying probably it's an added pressure. First ball went for 6 and couple of runs here. But after the first ball, it's been a very good steady over. Huge, it played very, very well. Probably dropped him. Dropped in the covers. Wicket gone missing here for HSBC. It was hit very, very hard, but it had to be taken. He was strategically placed over there. You see the first ball being hit very, very well over extra cover, but that was hit very well and straight to the man, but it just popped out of his hand. The wicket gone missing here. First over is gone. We'll just come back with the score for Dell. Eight. And the score after the first over, Dell is 8 for no loss versus HSBC.
नवीन सिंह स्ट्राइक पे और ये पहली गेंद ओवर की उछाल लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर से हुई। पहले ओवर में 8 रन आए हैं। नवीन सिंह और सचिन तनेजा की सलामी जोड़ी इस वक्त क्रीज में मौजूद है। अभी तक 8 रन जोड़े हैं। जतिन गेंदबाजी आक्रमण में नजर आते हुए। ये अच्छी गेंद है। मिडिल लेग स्टंप पे आती हुई गेंद को ऑन साइड में उड़ा है। शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को उठाया जाए। सिंगल लेकर अपना छोर बदलते हुए 9 रन। पहले ओवर में 8 रन आए थे। अभी तक दोनों बल्लेबाजों ने 9 रन जोड़े हैं पहले विकेट की साझेदारी में। ऑन साइड में नजर डालें तो शॉर्ट फाइन लेग नजर आता हुआ। शॉर्ट मिड विकेट मिड ऑन साइड में 3 खिलाड़ी नजर आते हुए। विकेट कीपर के अलावा शॉर्ट थर्ड में गली नजर आ रही है। पॉइंट कवर बाउंड्री पर एक खिलाड़ी है। शॉर्ट एक स्कोर और लॉन्ग ऑफ साइड में। जतिन की गेंद एक बार फिर से सिंगल लेने का मौका। ये अच्छा कार्य करते हुए दोनों बल्लेबाज पिछली 2 गेंदों पर 2 सिंगल लेने में कामयाब हुए हैं। और शुरू में जरूर ये आत्मविश्वास में इजाफा करेगी बल्लेबाजों के लिए। बेहतर चीजें रहती हैं जब आप स्ट्राइक को रोटेट करते रहते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। 10 रन बिना किसी नुकसान के। पारी के दूसरे ओवर की गेंदबाजी की जा रही है। एचएसबीसी के कप्तान तमोजीत ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया है। दिल के इस समय दोनों ओपनर क्रीज में मौजूद हैं। ये अच्छी गेंद है। बहुत ही बढ़िया गेंद। विकेट पे आती हुई गेंद। बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को संभाला है। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। और शुरू में विकेट चटकाने की ओर देखेंगे क्योंकि कप्तान ने टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का फैसला किया, गेंदबाज उसे सही साबित करने की कोशिश करेंगे। और ये दोनों बल्लेबाज जानते हैं शुरू में कुछ धैर्य दिखाने की जरूरत है। इस बार दिशाहीन गेंद, दिशा से भटके गेंद जाती है बाउंड्री की दिशा में। तेज आउटफील्ड है पर गेंद बाउंड्री लाइन के करीब उठाकर थ्रो करे। दोनों बल्लेबाजों ने भाग करके भी 2 रन पूरे किए हैं। स्कोर है 13 रन बिना किसी नुकसान के। 13 विदाउट लॉस। दूसरे ओवर की गेंदबाजी की जा रही है। पावर प्ले चल रहा है। मैदान पूरी तरह से हरा भरा नजर आ रहा है। पीसीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ये खूबसूरत मैदान जहां पर ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने की कोशिश में। एक बार फिर से दिशाहीन गेंद, एक और वाइड गेंद, एक और अतिरिक्त रन। जब जब आप वाइड गेंद करेंगे अतिरिक्त गेंदें भी करनी पड़ेंगी और बल्लेबाज को मौका मिलेगा, हाथ खोलने का भी मौका मिलता है। अभी तक 14 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर की गेंदबाजी की जा रही है। पहले ओवर में 8 रन आए। संचित तनेजा और नवीन सिंह बल्लेबाजी करें। नवीन थोड़ा सा जरूर आक्रामक दृष्टिकोण अपनाए हैं 8 पे बल्लेबाजी करते हुए। ये अच्छी गेंद थी। पड़ने के बाद उछाल और विकेट कीपर भी चूके हैं और गेंद बाउंड्री के बाहर। बाई का चौका। अप्रत्याशित उछाल जिसे कहते हैं। बॉल पड़ने के बाद अचानक सीने के पास आई थी गेंद और इस गेंद को खेलने की कोई कोशिश नहीं की, बचने का प्रयास किया था। विकेट कीपर भी चूके वहां पर और थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। बाई के चौका। 18 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर की गेंदबाजी की जा रही है। जतिन गेंदबाजी कर रहे हैं। काफी दिशाहीन गेंदें कर रहे हैं और शुरू में शायद उनको अपने रिदम को हासिल करने में कठिनाई हो रही है, पर ये बल्लेबाजी टीम डेल के लिए बेहतर खबर है क्योंकि शुरू में जितना मौका मिलेगा बल्लेबाजों को हाथ खोलने का आजादी मिलेगी। एक और अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आई। अंतिम समय में गेंद को अपने से दूर ढकेला कवर पर और जब तक गेंद को उठाया जाए। तेजी से अच्छी कॉल की थी। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के मध्य। आसानी के साथ सिंगल लेने में कामयाब होते हुए
अच्छा तालमेल नजर आता हुआ। पहले विकेट की साझेदारी में अभी तक 19 रन जोड़े हैं दोनों बल्लेबाजों ने। 2 ओवर के बाद 19 बिना किसी नुकसान के। दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग KEI वायर एंड केबल्स SG Believe We Come Rejoin Grooming India. Over to Mayur. Thank you, Anwar. Been a very good start to this innings by Dell versus HSBC. The score says 19 for no loss. And all this action live from this beautiful PCL Sports Complex in Noida. It's for outside off stump, plays it well. Ball hasn't come to the bat very well, but the batsman has done very well this opening partnership to see the shine out of the ball and collect these easy singles. Not been very easy. The first time that I'm seeing a team in action on this ground number one. My co-commentator have seen much of this action. Here's the next ball from Pranab. Very well bowled, but equally well played towards the man at third man. Get a single, will retrieve it back to the wicketkeeper. The score moves on to 20 for no loss. Started off with a very nice 6 over extra cover. And after that, the scores it hasn't dried up as yet for Dell, but HSBC, they have done very well to come back up and get hold of it. Here's the next ball. Set off stump plays very well, probably a tick outside edge, and probably the slip must have been very busy if there was one, but there's no one to accompany the wicket keeper. He has to do the lone walk to get everything moving. A single will be taken nonetheless. The score will now move to 22 for no loss for Dell versus HSBC. The sun is actually playing hide and seek here at the PCL Sports Complex in Noida. Outside off stump plays over the man at mid on, and it will go to the boundary for 4 runs. It will hit the branding board of Grooming India. Definitely he's grooming himself up to score some runs, and this will be welcomed by Dell. I was talking about the momentum of runs which was trying to come from the bat, and this 4 will cause a welcome reprise for Dell. And the score now moves on to 26 for no loss. Nice little partnership growing up here. And the wicket column still says 0. And not a very warning bell here for HSBC, but you never know the shorter formats. If you don't pick up wickets, you might just be at a non-driver seat. Here's the next ball. Outside off sound slashes it very well, but the man does equally a good amount of job. The stump's been broken. A gentle appeal from the wicketkeeper to the square leg umpire, but he is just running just to help the stumps get back in position. Score remains on 26 for no loss here for Dell. Seeing the ball very well. The ball has been coming up to the bat very quickly, so being very cautious start. But the runs have come also as an addition to the batting team. Here's the next ball. Outside off, some tries to slash and wide by umpire Ashwin Kumar, and he didn't need any second invitation to extend his wide arms. He was trying to slash. Thankfully, the ball didn't connect his bat. Otherwise, the wicketkeeper would have danced and on the 27 for no loss. Here's the next ball. On middle leg, grab little
beautifully with soft hands towards cover. Will rotate the strike. Will take a very quick single. Did it very well. That's very important. The score moves on to 28 for no loss with the end of the third over. शुक्रिया मयूर। और इस वक्त स्कोर है 28-3 ओवर के बाद जतिन गेंदबाजी आक्रमण पे नजर आते हुए। और इस बार नेक्स्ट पे गेंद ग्लांस कर दिया गेंद फाइनल एक बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए स्वागत किया है गेंदबाज का आते ही नेवर की पहली गेंद दिशाहीन गेंद बहुत ही बढ़िया निष्पादन नवीन सिंह के द्वारा बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नवीन सिंह और उनके साथी बल्लेबाज संजीत तनेजा। और इस तरह की शुरुआत की बहुत जरूरत भी है डेल के लिए क्योंकि आप जितनी बड़ी साझेदारी करेंगे उतना बड़ा मंच प्रदान करेंगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए। अभी तक बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की है नवीन सिंह ने और जब जब कमजोर गेंदें मिली उस पर बढ़िया ट्रीट किया है। और इस बार भी दिशाहीन गेंद थी पैड लाइन पे आती हुई गेंद बहुत ही उम्दा तरीके से गेंद को निकाला। फाइन लेग का खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग पर था थोड़ा सा उसके बगल से गेंद को निकाला था। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी नजर आते हुए ऑफ साइड में अगर आप देखा जाए तो घेरे के अंदर 4 नजर आते हुए 2 खिलाड़ी बाहर है कवर और लॉन्ग ऑफ। जतिन ये ऊपर डाली विकेट ये लास्ट शॉट है परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं जो लोग अक्सर खामोश रहते हैं जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। नवीन सिंह के बल्ले का हुनर बोल रहा है बल्लेबाजी का हुनर बोल रहा है बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए लेग स्टंप पे गेंद थी उस पर चौका मारा तो और अगली गेंद ऊपर डाली उसको काऊ कॉर्नर के ऊपर से मारा है आसानी के साथ छक्का प्राप्त किया है 32 बिना किसी नुकसान के। नवीन सिंह पहुंचे इस 6 रन की मदद से। और 38 रन 24 पर पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से पैड लाइन पे गेंद हल्की सी अपील दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया है। ये अच्छा कार्य किया है नवीन सिंह ने पिछली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे चौका छक्का फिर सिंगल लेकर अपना छोर बदला है। इससे गेंदबाज की जो रणनीति होती है वो विफल हो जाती है और एक सही सोच दर्शाई है बल्लेबाज नवीन सिंह ने। बड़ी पारी खेलने के लिए इस तरह की रणनीति पर भी काम करना पड़ता है और शायद डेल का खेमा जब मैच शुरू हो रहा था उससे पूर्व में अगर आप देखें तो एक घेरे पे शायद इसी स्ट्रेटेजी पर काम चल रहा था और उसको आखिरी जामा दिया जा रहा है इस वक्त दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। ऊपर डाली हुई गेंद इस बार थोड़े से जरूर कांटा बदली थी लेकिन इंतजार किया गेंद को खेला है गेंद बहुत बड़ा है 4 रन मिलेंगे सीमा रेखा के बाहर गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर जाती हुई संजीत तनेजा के बल्ले से इस बार बाउंड्री आई है और ये फर्क रहता है जब आपका बुरा वक्त आता है तो फिर आता ही चला जाता है। जतिन के खिलाफ आक्रामक दृष्टिकोण अपनाते हुए दोनों ही ओपनर्स इस बार संचित नहीं बल्कि संचित तनेजा ने इस बार चौका मारा। इस बार उछाल लेती हुई गेंद इस पिच पर कई बार अप्रत्याशित उछाल देखने को मिला है और बॉल पड़ने के बाद अचानक सीने के आसपास आती है। ऐसे में बल्लेबाज को जरूर दुश्वारियां रहती है लेकिन अपने आप को संभाला है और जैसे कि मैंने टॉस के दौरान में कहा था कि यहां पर शुरू में आधे घंटे काफी अहम रहने वाले हैं और ये दोनों बल्लेबाजों ने उसे बखूबी अब तक खेला है। अभी तक जो भी खेल हुआ है उसमें बल्लेबाज हावी नजर आए। 44 रन की भागीदारी हुई अभी तक। चौथे ओवर की गेंदबाजी की जा रही है। गेंदबाजी का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है और यहां पर औसतन स्कोर 180-190 रन बनता रहा है। देखना होगा आज कितना बड़ा स्कोर खड़ा करती है डेल। ये अच्छी गेंद थी वापस बॉलर की दिशा में खेला फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया है। ओवर समाप्त होता हुआ 4 के बाद डेल का स्कोर है 44 बिना किसी नुकसान के
नवीन सिंह 24 और संचित तनेजा 10 पे बल्लेबाजी करें। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अहम जरूरी साझेदारी होती हुई डेल के लिए। पहले विकेट की साझेदारी में अभी तक 44 रन जोड़े हैं। अच्छी शुरुआत की जो जरूरत थी वो डेल को दिलाई है दोनों आरंभिक बल्लेबाजों ने। और अगले ओवर में क्या कुछ होता है, माइक्रोफोन पर एक बार फिर से हमारे साथी कमेंटेटर मयूर, स्वागत है आपका। Yes, thank you, Anwar. Always a pleasure. Always a pleasure to hear you. And Kapil has the ball in his hand. His main focus will be the wicket column. It still says 0-44 for no loss Patel versus HSBC. And let's see if he can create some immediate impact. And I remember last Saturday, the captain himself from PwC, he brought on himself and had immediate impact. He picked up a couple of wickets. And after that versus KPMG, that actually helped them to go towards side. And eventually, it was a very nail-biting finish. And PwC being the eventual winners versus KPMG. And here will be the first ball. And will be the spin in action here for HSBC. Very fly in the air, just short of the man. Had mid off. He'll take a quick single. He did try and attempt to dive forward, but probably the puff of dust eluded his eyesight. And the color of the ball and the sand probably just must have fooled his eyes. But nonetheless, 1 run being taken, rotated the strike, 45 for no loss. The wicket column, that's 0, is something will be very, very worrying signs for the captain of HSBC. So, townships and attempt offers nearby. 6 here and there, a flat batted, trying to swing it like a tennis racket in his hand. But no run, probably not to the pitch of the delivery. Score remains on 45 for no loss. Outside off stump, more spinning as yet. Again was trying to play a little bit of the back foot. Didn't connect it. It's very important, as you have mentioned earlier, and I've my co-commentator Anwar have also mentioned that on the leg side will be a very good. With a single was trying to just will have to come very, very quickly, not allow the ball to hit the helmet. Otherwise, there might be just 5 penalty runs. Been very, very well done by the fielder himself to stop by his feet. But a very, very quick single that was being taken. That was a risky single. The score will move to 46 for no loss. But this communication is very, very much being inside for the batsmen. They are doing it very well, rotating the strike, not allowing the field to set in right. Here will be the next ball. And outside off stump. Again, the footwork is so important to play to the pitch of the delivery. Probably just a lazy shot. Both his foot almost grounded to his crease. The score remains 46 for no loss for Dell. Outside off stump again. There will be a slip, but the ball will slowly move away between the fielder at point in gully, with single will be taken, and that will bring the end of the over. 47 for no loss for them after the end of 5 overs. The run rate is very, very good. They haven't lost any wickets. All the 10 wickets are intact. And my co-commentator, Anwar Siddiqui, he has lot many things to say, I'm sure, with his poetry in motion. Where is Anwar with his mic in action? तो 5 ओवर के बाद स्कोर है 47 बिना किसी नुकसान के। बहुत ही उम्दा शुरुआत मिली है डेल को। दोनों बल्लेबाज बहुत ही धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस अंदाज में अभी तक बल्लेबाजी की है, ज्यादा जोखिम नहीं उठाया है।
और जब जब कमजोर गेंद मिली उस पर बड़े शॉट लगाने की कोशिश की है। 47 की भागीदारी पहले विकेट की साझेदारी में, अभी तक कोई विकेट मिली नहीं। आकाश गेंदबाजी आक्रमण पे नजर आते हुए, गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है, देखना दिलचस्प रहेगा कितना ये इंटरेस्टिंग रहता है, कितना कारगर साबित होता है। कप्तान तमोजीत लगातार अपने गेंदबाज के साथ बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये साझेदारी तोड़ी जाए, क्योंकि जितनी बड़ी साझेदारी होगी चिंता की रेखाएं उतनी ज्यादा गहरी होगी, क्योंकि हाई स्कोरिंग मुकाबला होने की संभावना रहेगी। और जब एक बार स्कोर बोर्ड पर बड़ा स्कोर खड़ा हो जाए तो जब आप चेज करने उतरते हैं तो आपके ऊपर दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। उस प्रेशर से बचने के लिए कप्तान तमोजीत अपने सारे हथकंडे अपनाते हुए, पर अभी तक सफलता मिली नहीं है। पहले विकेट की साझेदारी में अभी तक 47 रन जोड़ चुके दोनों ही आरंभिक बल्लेबाजों ने। आकाश को बॉलिंग के लिए बुलाया है दूर वाले छोर से, रिवर एंड से गेंदबाजी करेंगे। 5 के बाद 47 संचित, 12 पर नवीन सिंह 25 पे। आकाश की गेंद ऑप्शन के बाहर पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकलती हुई संचित स्ट्राइक पे है। संजीत तनेजा जो कि 12 रन बना के बल्लेबाजी करें, दोहरे अंकों में प्रवेश कर चुके हैं और कोशिश यही है कि बड़ी से पारी खेली जाए टीम के लिए। बतौर ओपनर पारी का आगाज कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी लेंथ पर गेंद को पिच कराया था, वहां से बॉल में दोहरा दिशा परिवर्तन देखने को मिला। बॉल थोड़ी सी रुक के आई, जिस रफ्तार से बॉल आने की उम्मीद कर रहे थे। कई बार मैंने देखा इस पिच पर बॉल पड़ने के बाद ऊपर रही है, कई बार रुक के आई है, तो बल्लेबाजों के धैर्य की परीक्षा भी है। और शुरू में कुछ मिनट और इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती है। ऑप्शन के बाहर शॉट ऑफ गेंद ऑन साइड में घुमा दिया है, गेंद में विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी न समझो, जितनी गहराई अंदर उतना तूफान बाहर बाकी है। चौके के साथ 50 रन पूरे होते हुए 51 बिना किसी नुकसान के। दिल के द्वारा अच्छी शुरुआत, जो शुरुआत की जरूरत थी वो मिलती हुई। ये मैक्स प्रोटीन का कमाल है, बाजुओं में जान है और गेंद बाउंड्री के बाहर नजर आ रही है। 51 बिना किसी नुकसान के। छठे ओवर का खेल प्रगति पर है, पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी अभी तक हुई है। एक बार फिर से बढ़िया निष्पादन, बैक टू बैक दूसरा चौका। दिशाएं थोड़ी सी बदली है पर दशा नहीं बदली। गेंद एक बार फिर से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए शीशा पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। संचित अभी तक खामोश नजर आ रहे थे जब नवीन सिंह की आक्रामक बल्लेबाजी का वो आनंद उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने शायद अब ये ठान लिया है कि अब मेरा भी समय आया है और ये कार्य तो को करते रहना होगा। बड़े स्कोर के लिए बड़ी लगन के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। आकाश के ऊपर दबाव बनाए जमीन पर ये दोनों बल्लेबाजों की। ये अच्छी गेंद थी, ये दूर से खेले थे और एज लगती तो खतरे में पड़ सकते थे। अच्छी वापसी कहेंगे गेंदबाज आकाश के द्वारा। पहली दूसरी तीसरी गेंद पर अगर आपके खिलाफ गेंदबाजी करते वक्त बाउंड्री लग जाए तो फिर आपको वापसी करना कठिन होता है, और यहाँ पर अच्छी कोशिश नजर आई आकाश के द्वारा। एक बार फिर से ऊपर डाली गेंद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से गेंद को फील्ड करेंगे। 1 रन लेने का मौका है। ओवर में अभी तक 9 रन आ चुके हैं, एक अच्छा ओवर घटा है। 55 रन अभी तक कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले में जिस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत थी वो दिलाई है दोनों ही आरंभिक बल्लेबाजों ने। एक अच्छा फाउंडेशन दिया है, मजबूत नींव रखी है। अब यहाँ से इमारत कितनी बड़ी खड़ी करेंगे ये समय बताएगा। आने वाली 84 गेंदें शेष है, 14 ओवर का खेल आना शेष है। पर ये दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी की बात करें तो संचित 21 पे बल्लेबाजी करें, नवीन सिंह 25 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले समाप्त होने के बाद स्कोर है 56 रन। आइए अगले ओवर में क्या कुछ होता है। माइक्रोफोन पर एक बार फिर से हमारे साथी इंग्लिश कमेंटेटर मयूर बारुआ आपके साथ अब इस मुकाबले का आनंद उठाते रहे। Yes, thank you, Anwar. What an over that was! 6 overs, 56 for no loss. Still in search for that 1 wicket is HSBC. Lot of head scratching, I'm sure, will be done
for Captain का नाम क्या था? For Captain Tomojit. And he did have a very happy smiling face on the pitch while during the toss. I'm sure that smile must slowly be diminishing from his face. But one wicket and the script might just be different. Sanchit and Navin Singh outside off stump played it very well. There is a super cover. Will get a single 57 for no loss. But Sanchit Taneja and Navin Singh doing the opening partnership work very well for Dell. Sanchit Taneja 22 not out of 21. Navin Singh 25 not out of 16 deliveries. And Kapil Mehra, it's been an economical over. 4 runs of his 7 deliveries. But his main job will be to get that 1 wicket or a couple of wickets. But to start off the proceedings, it's important for Hsbc to search for that solitary wicket. Here is the second ball from Kapil Mehra. It's in the air. Who's underneath it? And we'll have a safe pouch. We're talking about a wicket, and Kapil Mehra has gifted them a wicket now. It was very high in the air, and the fielder settled under it very well, running in from long off. It's never easy. The sun right on your face. He hasn't worn a goggle, so that must have made his task equally tough. But he held underneath it very well. Anwar, he has picked up a very important wicket. What do you want to say? This was a crucial catch too. बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कैच था और जिस तरीके से दौड़ करके आए हैं मुझे लगता है कि इसको सेफेस्ट प्लेयर ऑफ हैंड्स के ये बड़े दावेदार बन सकते हैं पर बेहतरीन कैच पकड़ा है अच्छी शुरुआत की जो जरूरत थी वो मिली नहीं थी पर अंत में विकेट मिला है और यहाँ से अब एक नई इबारत लिखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से जो आपको मोमेंटम मिलता नजर आ रहा है इस मोमेंटम को कैच करना पड़ेगा. Yes, that's the word momentum that you have said, Anwar. The momentum is so important. You cannot lose that. Batsman, I'm sure the think tank must have gave him some good words of how to approach it. And they have quite good number of overs to see. But as of now, it's celebration time for the man in blue and red. For Hsbc, they have picked up this wicket. And the bowler, Kapil Mehra, he will be very happy with that wicket. 1 for 4 is what his bowling figures will say, and I'm sure he'll be inching to pick up some more wickets here under his telly, because it's imperative that you keep that wickets flowing also. We've seen the runs being flowing here at this ground, at this beautiful last green here, PGL Sports Complex, Noida. This is Dafa News Pro Corporate League. And thank you to all the sponsors also. Let's take a moment to thank them. KI Wires, IFCO, Dafa News, of course, and we are playing with this lovely, prestigious SG ball, the legendary SG ball, renowned SG ball, and shining here at this beautiful sports complex. And thank you to all the sponsors. And also not to forget the energy bar, Max Protein Energy Bar. And why not the Vizon Tosca boss grooming everyone? I'm sure everyone will turn out to be very fair and cool after the finish this tournament. We have already seen the ball going towards the V-zone banner, and I'm sure that the sponsors will be very happy that the focus was on them for the moment. The banners have been very strategically placed. The straight banners, of course. Dafa News, the title sponsor of this prestigious season 11 of the Pro Corporate League. And we'll have a small drinks break at this fall of this wicket. The sun is playing hide and seek, and it is again coming out, and probably a regular surge of drinking water will be the order of the day. And
We have one more match to be played, and at this venue itself, no matches to be played at ground number 3. Last week there were simultaneous matches being played at ground number 1 and ground number 3, but today, for this Saturday, we just have 2 matches being lined up at this ground, and from tomorrow, of course, we'll be having matches being played simultaneously on ground number 1 and ground number 3. But back in action, the umpires are there, and I'm sure this drinks break will be very refreshing and energizing for both the teams. For the man in red and blue, the Hsbc, and the man in grey and green, the Dell. At the moment, Dell 57 for 1, 6.2. They have just lost a wicket, and uh, they, I'm sure, they're still very motivated to inch towards more runs on the board. And motivation, being motivated, is was the key word that my co-commentator Anwar Siddiqui was saying. That it's very important to keep the momentum going, no matter that you lose a wicket. But when you have batsmen coming at your end, I'm sure then the bowlers do get that extra pressure. And मैं 3 एक बार करा तो 57 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान में। पहली कामयाबी मिली है नवीन सिंह पवेलियन में 25 रन बनाकर आउट हुए हैं और आखिरकार कपिल मेहरा को सफलता मिली है। परिवर्तन के तौर पर कप्तान ने बुलाया था, काफी देर से इंतजार किया जा रहा था। 6 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 7वें ओवर में यह सफलता मिली है। नए बल्लेबाज और अभी तक देखा जाए तो दूसरे छोर पर संचित तनेजा क्रीज में मौजूद है। अभी तक प्रणव ने 2 ओवर में 17 रन दिए हैं। जतिन ने 2 ओवर में 20 रन महंगे साबित हुए। कपिल मेहरा अपना दूसरा ओवर डालते हुए 4 रन दी। बहुत ही अच्छी इकॉनमी रेट रही है, काफी किफायती रहे और इसी का परिणाम ही उन्हें मिला है। एक और अच्छी गेंद, कामयाब नहीं हो पाए। कशिश आए हैं नए बल्लेबाज। बहुत कवर के खिलाड़ी आते हुए गेंद को उठाने के लिए सिंगल लेने का मौका है। 1 रन लेकर अपना छोर बदलते हुए स्कोर 58 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत तेज आउटफील्ड है।
किया था, बल्ले को लगाने का प्रयास किया, किस्मत वाले हैं, गेंद बल्ले पर आई नहीं। ओवर समाप्त हुआ है। सफल ओवर के समापन के बाद 7 ओवर के बाद डेल का स्कोर 58, 1 विकेट के नुकसान पे। अगर आप देखिए रन औसत में गिरावट आई है और कपिल मेहरा जब जब गेंदबाजी कर and to play steadily to hold one end and then try and gain the momentum, which is important. Not to forget the occasional boundaries and sixes. But as you keep building along, the partially pressure keeps on mounting and mounting. And eventually, when you release the pressure at one end, 10 is something which you definitely love to see, uh, especially from the batting side. And we have a new spectator actually on the ground. Sam, come in. And he's just strolling itself through the covers. I'm sure he wants also to enjoy a good game of cricket. Probably a lazy Saturday morning, not much to do. But back in business, we are here. 58 for 1, 7 overs. Ready with the first ball. कोई फैन है क्या हमारे पास? फैन लैपटॉप पे लगना है। Spun very well on middle and leg. And the non-striker wasn't prepared enough. He was actually ball watching. Probably there was a second run in contention, but a single nonetheless will be taken. And score will now move to 59 for 1 for Dell versus Hsbc. Sanchit Taneja, 22 not out of 23. Kashish have just stepped in his last over, 2 not out of 3 deliveries that he has faced. First next ball. It's been very well, was trying to go down the ground, but couldn't middle. I'm sure he'll be touch disappointed. Probably not the angle that he was trying to look at it. But nonetheless, we'll get a single. That was a very, very quick run. They're all being very, very quick off the feet. All these batsmen that we have seen. Here's the next ball. A gentle appeal, probably not everyone in unison for that appeal. Probably a little bit of an inside edge that must have just saved the batsman here. Very, very too much off the back foot. They have to be very, very careful. The ball hasn't been bouncing too much. Again, he was trying to cross back that shot. Wait for the umpire signal. And that will be a wide actually. And a wide and a run. Won't be very, very happy with that one, of course. Never a pleasing sight when you get that extra on the board, and also when the batsman rotates the strike. 2 runs on the board. After back foot, will take a single, and by the time the fielder runs in and short field, but will not get a second run. 1 run will be taken. The score will now gently move on to 63 for 1 for Dell. Very, very off the back foot, cuts well. Will the ball go to the boundary? And it does towards the third man. For that, as soon as the ball was angled, it came swirling on this green outfield towards the third man boundary for 4 handsome runs for Dell. The score will now move on to 67 for the loss of 1 wicket with 1 legitimate delivery remaining here from Aman Rathi. Very, very short outside off stump, smashes it very well, but there is a protection at the mid wicket. Will just get a single, and that will finish the over of Aman Rathi. So 8 overs have been bowled. Dell is now 68 for 1. And the mic reins will now be handed over to my melodious commentator, who has already set the mood in action for Hindi commentary. And Anwar Siddiqui has the mic in his hand very, very proudly. शुक्रिया। 8 ओवर के बाद 68 विकेट के नुकसान पे
डेल का औसत अगर आप देखें तो पिछले 2-3 ओवर में काफी तेजी के साथ नीचे आया है और इसका बहुत हद तक कारण है स्पिनर्स जब से गेंदबाजी आक्रमण पे नजर आ रहे हैं काफी हद तक रनों की रफ्तार पे अंकुश लगाया है। कपिल मेहरा ने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की, 2 ओवर में मात्र 5 रन दिया, एक सफलता मिली है। अमर राठी ने पिछले ओवर में 9 रन दिए, तक 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है। आने वाले 12 ओवर का खेल शेष है और ये ओवर की पहली गेंद स्टेप आउट करके बाहर निकल के मारना चाहते थे, गेंद की लाइन से दूर थे। अब स्टेप आउट करते हैं तो ये काफी अहम रहता है, आपका फ्रंट फुट किस तरीके में किस दिशा में जाता है। और इस बार कड़ा प्रहार, 4 का वार, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए ऑफ स्टंप के बाहर। हल्की सी इस बार हाथ चलाने की आजादी मिली, टूट पड़े गेंद के ऊपर और चौके के रूप में गेंद सीमा रेखा के बाहर नजर आई। कशिश की ये कोशिश कामयाब हुई इस बार, 72 विकेट के नुकसान पे। पहली गेंद डॉट हुई थी, उस पर भी बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया था पर इस बार चौका प्राप्त कर लिया है और इस बार गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के पास। लगातार चहलकदमी कर रहे हैं, क्रीज छोड़ के बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं। कशिश शांत रहने वाले बल्लेबाजों में से नहीं है। 73 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। Pressure also. What do you say, Anwar? बिल्कुल, अगर आप देखें इन्होंने जिस तरीके से चेंज ऑफ पेस की है और इस गेंद को धीमी रफ्तार से छोड़ा था, पिछली 2 गेंदें जिस पर चौका मारा था वो तेज रफ्तार से गेंद डाली थी और इस बार देखा कि फिर से बड़ी स्ट्रोक के लिए क्रॉस द लाइन मारने का प्रयास किया था। सीधे बल्ले से खेलने के बजाय आप जब क्रॉस बैटेड शॉट लगाने का प्रयास करते हैं तो इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं बल्लेबाजों की खामी नजर आई, क्योंकि और गेंदबाज ऐसी खामियों को ढूंढते नजर आते हैं। उन्होंने इसीलिए चेंज ऑफ पेस की थी, धीमी रफ्तार से गेंद को छोड़ा था, ऑफ स्टंप से जा लगी, बल्ला पहले चला, गेंद थोड़ी सी लेट पहुंची थी और परिणाम दूसरा विकेट गिरा है। एचएसबीसी को मुकाबले में वापसी करने का रास्ता बना दिया है गेंदबाज कपिल मेहता ने। अभी तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है इन्होंने, कपिल मेहरा।
प्रणब ने 2 ओवर में 17 दिए हैं, जतिन ने 2 ओवर में 20 रन दिए, महंगे साबित हुए। अनुराग तोमर आए हैं बल्लेबाजी करने, तो ये अच्छी गेंद है, ऑफ स्टंप है, स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई, खिलाड़ी ने गेंद को उठाया, 1 रन लेने का मौका। अनुराग तोमर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, यहां से एक साझेदारी बनानी होगी, जिस तरह की शुरुआत दोनों ही आरंभिक, अनुराग तोमर और कशिश को एक साझेदारी बनाने की जरूरत होगी। मयूर स्वागत है, 9 ओवर के बाद 78 2 विकेट के नुकसान पे। Dell will be little praised for sure. The captain, but the runs. But the runs haven't dried up too much. Again, this we've seen this lefty-righty combinations have offsetted the fielding combination so much. And as soon as you put those rotation of strikes, it upsets the rhythm for the captain also to keep on changing from your fielder from the left to right, from the right to left. The mid on, mid off gets in action also. And over the wicket here. Trying to tap on the leg side. We'll wait for the umpire signal. And yes, it's off the bat. And we'll get a single to his telly. And score will now move to 78 for 2, 79 for 2. Anurag Tomar, 2 not out of 2. And Kashish, 12 not. Good, yeah, it's a better. 80 for 2. 80 for 2 in 9.2 overs. A very healthy run rate being maintained by Dell. They will try and look in excess of 150, 160, or in fact 180 also. Here's the next ball. Off the back foot, played this very well. The fielder giving it a chance, but he will just be a spectator. He will definitely applaud this shot. This went like a tracer bullet onto the boundary. It's a very quick outfield. Very nice last green outfield. Actually could trace the ball the way it went off the bat. It went off very quickly. 4 healthy runs to the total for Dell. The score will now move on to 84 for 2. And thankfully, Anwar, this time they have hit a shot while I'm doing the commentary, but most of them have come while you were doing your poetry in motion. But back in business, 84 for 2. Very nice off the back foot stroke. Very well done to disdain it from middle and leg, and 4 runs written all over it. 84 for 2 in 9.3 overs. The ball seems to have got lost. This is one worrying sign. Probably by the end of the tournament, we'll be seeing white all around on the paddy field with SG balls all around. It would be so good if we can regrow them from there, from the balls, and that might just help us to
quicken up the pace of the game. But those are for the future course of action. But live as in now, ball yet to be retrieved. Probably we just might see another delivery. Now it's a big impetus actually on the batsman. Probably little jokingly, not to hit the ball very hard, becomes very tough. Just imagine someone playing like Yuvraj Singh, 6 balls, 6 sixes, and you have a retrieve the ball trying to search, and that will be so much of pressure on the company SG itself. But and two great names today in action again, Dell and Hsbc. One into banking, one into software and other hardware appliances. Two lovely teams competing against each other. And already we're having a great competition with Dell 84 for 2 in 9.3 overs with 3 more deliveries to go. We join Oscar Boss grooming India with see all lovely cricketers here. I'd like to thank all our sponsors. Dafa News, the title sponsor of the Pro Corporate League. And Vision, we already had the Tosca Boss. Today was Dell. And then we had Vision grooming India. We have IFCO, KI Wires, and not to forget SG, the legendary SG ball with which we are playing each and every match of this tournament. And also, very short outside off stump. Fielder giving a chase and it will be on to the boundary. After a short little break, the result has remained the same. 4 back-to-back boundaries here. Looks so elegant off the back foot, on the front foot when he drives the ball towards mid-on also. And we were talking about SG ball, and the ball has actually gone towards his home actually, towards SG and Dafa News banners. And we were actually talking about our energy bar sponsor, Max Protein. Probably 1 or 2 crackle of that Max Protein, and you'll have ample energy to dismiss the ball. Off the front foot. Plays it very well. We'll come back for the second. There is no oohs and ahs on that. 2 runs were all written over it. And come over. A little bit short, and he has taken the ball to the clean edge. He has treated every ball very disdainfully. So the onus is actually on the bowler to bowl it very quickly to probably invite the batsman to play on the covers. It's been very heavily packed. There are 2 fielders on the onside protecting the boundary. You have seen they have hit the ball with so much of power while on the back foot. Here's the last ball of the 10th over.
again off the back foot, will just get a single, and that will bring the end of 10 overs. Half of the innings have been bowled. The score is now 91 for 2. 10 ओवर के बाद 91 2 विकेट के नुकसान पे, और इस समय हो चला है ड्रिंक्स ब्रेक का। इस दौरान 10 ओवर के बाद 91 रन बनाए हैं, और जो संभावनाएं नजर आ रही है, बीबी 8 विकेट हाथ में है डेल के पास, तो आने वाले 10 ओवर में 100 रन के आसपास और बनाना पसंद करेंगे। कम से कम 200 के आंकड़े के करीब पहुंच सकता है ये पहली पारी में स्कोर टीम डेल का। लेकिन एचएसबीसी के कप्तान तमोजीत तो कोशिश करेंगे कि कम से कम रन पे रोका जाए। तो यहाँ पर एक छोटी छोटी पार्टनरशिप के जरिए 91 रन बने अभी तक 10 ओवर के बाद। स्कोर कार्ड चेक कर लो एक बार। एरर आ रही 502। एरर पे कैसे आ जाएगी यार स्कोर कार्ड पे, मतलब टिकर पे? हाँ टिकर पे। चल भाई अंडू वगैरह करा था क्या? दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग दूसरी साइड से टांग। हाँ ये टूर्नामेंट के प्रायोजक वी जॉन ग्रोमिंग इंडिया, थोड़ा और लटका दे। एसजी, बस थोड़ा ऊपर कर दे। विली विकम एंड केईआई वायर एंड केबल्स, इफको, देख ले अब तेरे को ऊर्ता शाकाहारी स्वामित्व एंड मैक्स प्रोटीन। मूव करेगा तो दिक्कत तो नहीं आएगी। चेक कर ले, चेक कर ले एक बार मूव करके। चल भाई भाई पानी कहाँ भाई गया? अगर आप देखें तो 10 ओवर में 91 रन बनाए हैं। शुरुआत बहुत ही उम्दा दिलाई थी दोनों ही आरंभिक बल्लेबाजों ने, 52 और अर्धशतकी साझेदारी पहले विकेट के रूप में। उसके बाद विकेट दो लगातार जल्दी जल्दी विकेट हासिल किए गेंदबाज कपिल मेहरा ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, और उनकी बदौलत एचएसबीसी इस मुकाबले में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से एक और साझेदारी पर रफ्ती हुई, और 10 ओवर में 91 रन बने। तो यहाँ से 190 के आसपास आसानी से स्कोर बनता नजर आ रहा है। अगर 190 रन या 200 के करीब स्कोर बनता है तो थोड़ा सा जरूर अपने आप को बेहतर महसूस करेगी डेल, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर आप 200 के आंकड़े को छूते हैं तो अपने आप को जरूर थोड़ी सी राहत की बात रहती है। पर T20 में कोई भी स्कोर सुरक्षित रहता नहीं है, पर उसके बावजूद जरूर आपके पास एडवांटेज रहता है, आपके गेंदबाजों के पास मौके रहते हैं। तो यहाँ से आने वाले 10 ओवर में आपको क्या लगता है, आने वाले 10 ओवर में कितने रन और बन सकते हैं, क्योंकि 8 विकेट अभी भी डेल के पास मौजूद है? Yes, I would say this is 91 for 2 in 10 overs. Probably 100 more runs from here, because they have 8 wickets in hand. I'm sure there'll be some very good, strong batting more to come for Dell. And but the question is there, how to break this partnership now. And we have seen pretty much at an average of at least two boundaries coming in each over, which is an added pressure on the captain to think his strategies. Probably this strings break and a wicket allows you to probably think and strategize, and see the weaknesses of the bowlers, and allow them to regroup. And but the runs have actually, what you have actually said, the runs haven't dried up for HSBC. Probably that's a worrying sign. But if this continues, probably 100 more runs will be up for taking for them. Confidence back,
and try and be in the driver's seat. But as of now, it's a man in green who are the driver's seat, very firmly there. And the lefty and the righty combination actually is also not helping them, helping the man in blue and red to place the man very well. And master too many wickets. Here's the next ball. Flights the ball very well. The batsman downs to his tune. This is good bowling outside off stump on Midland off, and this is very important. And to create some uncertainties, create some doubts, create some seeds in the mind of the batsman. That was very well bowled. Nonetheless, they'll get a single. The score will now move on to 92 for 2. There's singles or probably the couple zone hit won't hurt too much, but as well what the boundaries are. But it's now imperative for HSBC not only to drive the runs but also to gain as many wickets as possible. 92 for 2. Here is the next ball. Off the back foot, the ball didn't turn much. He played it very carefully towards cover. Will get a single. Score moves on to 94 for 2 for Dell. I beg your pardon, 93 for 2. Being little biased probably, but beg your pardon, 93 for 2. Very well bowled. Outside off stump was almost yorked himself. Thankfully, the ball didn't ricochet it back to the stump. He'll pick up a single. Again, the lefty-righty combination. No run. This take inside edge onto his boot, and the wicketkeeper does his shows. He'll not help any help around the corner. He'll have to do. Will have to do all by himself. Here's the next ball again. Very short outside off stump. Dabs it towards cover. Will get a single. Rotates the strike. Score moves on to 94 for 2. 94. I'm again 1 run behind. It's 95 for 2. Flights the ball very well. Was trying to swing the ball on the leg side. Probably was trying to hide a gap. But that will bring the end over. And it's actually good wicket keeping also. He kept his eye till the last moment. Did very well. But a credit to the batsman also. In pursuit of trying to hit the long run, sometimes your back foot just comes up. But he did it very well to be inside his crease. That will bring the end of the 11 over. The score will remain on 94 for 2. And 95 for 2. And the mic will be now in the hands of Anwar Siddiqui. शुक्रिया कप्तान सामोजीत गेंदबाजी आक्रमण पे आए हैं 11 के बाद 95 2 विकेट के नुकसान पे दिल का स्कोर है और इस वक्त कप्तान सामोजीत अपने आप को गेंदबाजी के लिए खुद लेकर के आए हैं और अब 9 ओवर का खेल आना शेष है 95 रन बने हैं पिछले ओवर में मात्र 4 रन आए थे अच्छा किफायती ओवर डाला था काफी टर्न देखने को मिला था बल्लेबाजों को परेशान किया था ऐसी गेंदबाजी की जरूरत है एचएसबीसी के कप्तान को एक बार जब बड़ा स्कोर खड़ा हो जाएगा तो फिर मुश्किल रहेगा चेस करते वक्त कप्तान तमोजेत गेंदबाजी आक्रमण पे नजर आते हुए कशिश और अनुराग तोमर की जोड़ी क्रीज में मौजूद है
कशिश स्ट्राइक पे। ऑफ साइड में देखा जाए तो तीसरे दायरे के ऊपर 3 खिलाड़ी नजर आते हुए, कवर बाउंड्री पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक खिलाड़ी, 5 ऑफ साइड में है और 4 ऑन साइड में नजर आते हुए। एक अतिरिक्त खिलाड़ी को बुलाया है शॉर्ट थर्ड मैन पर। यूं डाली गेंद, ड्राइव किया गेंद लॉन्ग ऑफ पे जाती हुई, आसानी के साथ सिंगल लेने में कामयाब कशिश। 96 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 100 के आंकड़े से 4 रन दूर अभी भी टीम दिल, यानी कि 12वें ओवर का खेल प्रगति पर है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन क्रीज में मौजूद है अनुराग तोमर स्ट्राइक पे। बड़ी ख्याति रही है अनुराग तोमर की, देखना दिलचस्प रहेगा कितनी बड़ी पारी खेलेंगे, अपनी टीम को कहां तक लेके जाते हैं। फिलहाल फील्ड का मुआयना करते हुए 96 रन 2 विकेट के नुकसान पे कप्तान तमोजीत अपना पहला ओवर डालते हुए। ये अच्छी गेंद थी पर पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर ज्यादा निकली और अंपायर ने वाइड का इशारा दिया है। 97 रन। लेंथ अच्छी थी पर लाइन में थोड़ा सा गफलत हुई थी, इसका फायदा मिलता हुआ बल्लेबाजी टीम को अतिरिक्त रन के रूप में 97 रन। इस बार बैकफुट ओवर बहुत ही किफायती था, बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है। एचएसबीसी के कप्तान भी बढ़िया लेंथ पर गेंदबाजी अभी तक इन्होंने किया है। एक वाइड गेंद जरूर की थी, उसको छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के बढ़िया लाइन और लेंथ के तहत इन्होंने अभी तक गेंदबाजी की है। इस बार जगह बनाते हुए गेंद को खेला है, कड़ा प्रहार, 4 का बाहर गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए और इसी के साथ ही टीम के 100 रन पूरे होते हुए कशिश के बल्ले से ये चौका निकला है। कोशिश जारी रखने की जरूरत है। चले हो मंजिल को पाने तो मुश्किलों से टकराना होगा, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ जाना होगा। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, जिंदगी इतनी आसानी से गुजरती नहीं है। एक बार फिर से जगह बनाते हुए, और इस बार उतना अच्छा शॉट नहीं है और फिर भी 1 रन लेने का मौका है। 104 103 2 विकेट के नुकसान पे। 12वें ओवर का खेल प्रगति पर अभी भी 8 ओवर का खिलाना शेष है। यहाँ पर एक बड़ा स्कोर बनाने की ओर अपने कदम को आगे बढ़ाती हुई दिल। अनुराग तोमर स्ट्राइक पे। इस बार ऑन साइड में गेंद को फिर से खेला है, गैप और मिलेंगे 4 रन। एक और बाउंड्री इस ओवर में। कप्तान तमोजीत का ओवर महंगा साबित होता हुआ, हालांकि अनुराग तोमर ने उनके हाथ से एक हाथ छूट गया था बल्ला, उन्होंने शॉट खेला। इस चौके के साथ 107 रन। एक बार फिर से ये अच्छी गेंद थी और मैदान पर कोई नजदीक में खिलाड़ी नहीं है, सिंगल लेने का मौका बल्लेबाज अनुराग के पास। 108 2 विकेट के नुकसान पे ओवर समाप्त हुआ है। 12 के बाद 108 2 विकेट के नुकसान पे। आने वाली 48 गेंदें शेष है और यहां से अगर दोनों बल्लेबाज 10 रन प्रति ओवर की रन औसत से रन बटोरते हैं तो 80 रन और बनेंगे, यानी कि 190 195 200 का आंकड़ा छू सकती है अभी यहां से। 108 रन बने फिलहाल। इनका क्या नाम है ये बॉलर? नवदीप ने बढ़िया गेंदबाजी की, पिछले ओवर में बहुत ही किफायती रहे थे और बढ़िया लेंथ अभी तक इन्होंने हिट की है। बढ़िया रिदम में नजर आए हैं नवनीत।
ओवर की शुरुआत कर रहे हैं और उनकी ये पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आउट रन होती हुई बाहर क्यों निकलती हुई डॉट गेंद के साथ शुरू किया है डीप इसका लेग बाउंड्री पर एक खिलाड़ी है डीप मिड विकेट बाउंड्री पर आउट स्विंग इतनी तेज है कि अगर आप मिस टाइम भी करते हैं और शॉट में थोड़ी सी पावर है तो फिर गेंद सीमा रेखा के बाहर नजर आती है जैसे कि पिछले ओवर में देखने को मिला और यह बहुत अच्छी गेंद ठंड के साथ बीट किया है किस्मत वाले हैं बल्लेबाज क्रॉस द लाइन फिर से मारने का प्रयास किया था अगेंस्ट द स्पिन मारने का प्रयास चूक के गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में समाई है बॉल फटने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ टर्न उछाल देखने को मिला था क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज को खासा परेशान किया है इन्होंने अपनी गेंदबाजी से मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है कोशिश भी न की जाए ये गलत बात है नवनीत ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की इनको काफी टर्न भी मिल रहा है उछाल मिल रहा है बल्लेबाज को फ्लाइटेड गेंद करने से कतराते नहीं है जिगरे वाले गेंदबाज नजर आते हैं अभी तक इस पर कोई रन नहीं दिया 108 रन और इस बार चौथी गेंद पुल किया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए जैसी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ गेंद मिली पोजीशन में आए थे बढ़िया निष्पादन मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा है और जानते हैं कि बड़ा स्कोर बनाने के लिए बड़ा दरिया दिली दिखाना पड़ेगा बड़े जुनून के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है इस बार थोड़ा सा मौका मिला था 6 रन में तब्दील कर दिया गेंद को इस बार ऊपर डाली हुई गेंद जब गेंदबाज के खिलाफ बड़े शॉट आ जाते हैं तो गेंदबाज थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच के साथ गेंदबाजी करता है इस बार ऊपर डालने की कोशिश अपने आप को बचाने का प्रयास पर सिंगल के साथ अपना छोर बदला है अनुराग ने 115 रन 2 विकेट के नुकसान पे स्ट्राइक के फील्ड का मायना कर रहे हैं दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अहम साझेदारी पनपती हुई और जरूरत भी थी क्योंकि शुरू में बहुत अच्छी स्टार्ट दी थी दोनों 11 बल्लेबाजों ने इस बार ऑन साइड गेंद को निकाला है गेंद जा रही थी बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में बाउंड्री लाइन से गेंद को आए उठाए एक रन लेने का मौका बल्लेबाज कशिश के पास स्कोर बोर्ड को लगातार गतिशील रखे हुए दोनों बल्लेबाज पिछले ओवर के मुकाबले इस ओवर में नवनीत के खिलाफ थोड़ा सा जरूर आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया है जानते हैं कि नवनीत अगर हावी हो गई तो फिर बल्लेबाजी करना मुश्किल रहेगा और इसलिए अनुराग तोमर ने एक बड़ा शॉट लगाया छक्का मारा इनके खिलाफ इस ओवर में ये टर्न काफी देखने को मिला है पहली गेंद भी इसी तरीके की डाली थी इन्होंने ओवर समाप्त हुआ है 13 के बाद 116 2 विकेट का नुकसान में अगले ओवर में क्या कुछ होता है माइक्रोफोन पे एक बार फिर से मयूर स्वागत है 13 ओवर के बाद 116 रन बने आने वाले 7 ओवर का खेल शेष है क्या लगता है यहाँ पर जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी हो रही है ऐसा लगता है कि 200 का आंकड़ा छूना इनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए Yes, sir. Thank you, Anwar. Shouldn't be a difficult task at all. And I was about to use the term uphill, but to vote a batsman with this partnership, they will definitely have no questions in mind that any task won't be a daunting task. 116 116 116 for 2 and 116 for 2 after 13 overs. So 7 more overs to be bowled. A very good partnership here out in the middle. Couldn't have asked for more, the coach and the management. I'm sure they'll be very, very happy with the show that both the batsmen, the opening batsmen have also, the opening partnership was also very good. And this has actually led it to the inflow of more runs to the kitty of Hsbc. And now questions galore here for Dell. And then have to pinpoint the exact bowlers who are going to snatch a wicket for them. And at the moment, it's all looking a little gloomy for them. मैक्स प्रोटीन वाला
and that will be the power of probably the Max Protein sponsor that we have. And Max Protein, definitely it helps to build your strength. It will give you sustained energy, and of course it will satisfy your hunger. Probably all these three things combined. Giving room himself, hands on head for the bowler. And in search of that wicket again, probably touched little a word from the wicketkeeper himself, because he can see everything from behind. He was giving him room himself to hit the ball down the ground. Couldn't connect. The ball didn't bounce as much as he was expected. But nonetheless, the score will remain the same. And now we can see what the intentions are as we are going towards the finishing overs. Giving room himself again, will hit the ball towards deep long off, will get a single, will rotate the strike, again brings the lefty into equation. And they have done it. Going to use the long handle as much as possible, and the bat will slowly become a sword in both the hands of the lefty and the righty. And if the sword speaks well, I'm sure something around close to 190, 185, 190 won't be a distant dream here for HSBC. Outside off stump, in the air, and safely pouched by the fielder. Finally a wicket here for Dell. This was the wicket you're looking out for. And Navneet has taken it. Navneet has taken it very well, well judged. And thankfully for Dell, thankfully for HSBC, that's the wicket of a lefty, because the lefty-righty combinations always creates an issue. And they will be very, very happy to see the back of the lefty actually. Third wicket is down here. And score कितना? मैंने अभी कुछ नहीं जाके सर्वर शुरू करा और चला बैट्समैन ने मिडिल मरवा दिया मेरा लाइन और बोलू यार will get in with the score very, very soon. There was a small technical issue that we were facing, but the attacking live action very, very soon. We're trying to get the scores. Mihir Dhawan is the new captain who has walked up and will be joining his partner, Tashif. 27 not out of 20. The score is now 121 for 3 in 13.4 overs. So 138 balls now remaining. And, on the leg side, there is no protection, and the ball will go to the boundary for 4, and most importantly for HSBC, that is a wide also. So 5 runs without a legitimate delivery being bowled. That is criminal to bowl on the leg side, especially when you know there is no protection. There's absolutely no protection. There is no leg gully. There is no fine leg, and the ball has drifted down the leg side for 4. So the ball not only has to be rebowled, but 5 runs, 4 plus 1. And though they have managed to pick up a wicket in the form of a lefty, but runs again have flown off the bat. They did very well to get a single. Again, exposing all the 3 stumps is the batsman, but 127 for 3 for
Dell. Now it's on the wicket, but he'll be very, very disappointed. Well, he did very, very proud with the ball, just hit his feet and remained there itself. Will be returned back to the wicket keeper. I'm sure his eye just popped out as soon as he saw the skewer ball, but couldn't connect it well. The score will now remain the same and end of 14 overs. चौदह के बाद 127, 3 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर का खेल आना शेष है। मिहिर धवन नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, पर कशिश 27 रन बनाकर बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अभी तक 21 गेंदें खेली हैं, 4 चौके लगाए हैं मिहिर कशिश ने। मिहिर धवन नए बल्लेबाज, आकाश यादव ने उन्हें आउट किया। नवनीत शर्मा ने लॉन्ग ऑन बॉडी पर कैच पकड़ा। तीसरे विकेट का पतन हुआ है। नए बल्लेबाज मिहिर धवन क्रीज में पहुंचे, 1 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर। नेवर की शुरुआत कशिश ने इस बार गेंद को खेला है कवर बाउंड्री पर जाती हुई, सिंगल के साथ अपना छोर बदलते हुए 128। अच्छा मिहिर, अच्छा इसमें स्ट्राइक नहीं पता चलती, इसमें क्यों चलेगी भाई, थोड़ा बोलते वक्त भी ध्यान चाहिए। ये किसका घूम रहा है? और इस बार एज खिलाड़ी के हाथों में गेंद, आसान सा कैच, बल्ले का मोटा सिरा लेती हुई गेंद गली में गई और रिजल्ट उनके अब फेवर में आ जाता हुआ। फोन पे लगा ले, इस पे क्यों बैंडविड्थ खा रहा? चौथे विकेट का पतन होता हुआ। लाइव कर रखा है वो तो, हैंड टू हैंड चल रहा है साथ में, नीचे लाइव ये तो चलेगा ही, यूट्यूब पे देख रहा। हाँ कशिश पवेलियन जाते हुए जमे जमाए बल्लेबाज थे, एक बड़ी पारी की ओर अग्रसर हो रहे थे, लेकिन एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, नवनीत की खूबसूरत गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई, बल्ले का मोटा सिरा गली पर सुंदर कैच पकड़ा। So Anwar, what you feel will be now the ploy for HSBC? Now they have lost 2 wickets in 2 overs. What do you think should we do? Go with the long handle, gain more runs, or play a little cautiously now? अगर आप देखें जिस तरीके की वापसी की है, खासतौर से गेंदबाजी में नवनीत ने जो दबाव बनाया था, उसके बाद आकाश यादव ने बढ़िया बॉलिंग की, तो अब चौथे विकेट का पतन हुआ। बहुत ही अहम समय में ये विकेट हासिल किए हैं, क्योंकि यहां से एक साझेदारी बनती और 200 के करीब स्कोर पहुंच सकता था आसानी के साथ, लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा ग्रहण लगता नजर आ रहा है जिस तरीके की गेंदबाजी हो रही है। नवनीत बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, ये अच्छी गेंद है, अपील जोरदार तरीके से, लेकिन शायद उछाल के साथ एक स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, अंपायर के ऊपर अपील का कोई प्रभाव नहीं। पहले बॉल निकाल दे। काफी हद तक दबाव बनाया है नवनीत ने। अमन मीना नए बल्लेबाज, इस बार लेग स्टंप पे टप्पा पड़ने के बाद बाहर क्यों निकली थी, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्पिन होती हुई गेंद, काफी वैरायटी है, काफी मिश्रण करते हैं गेंदबाजी में नवनीत। तो अपना तीसरा ओवर डालते हुए 2.4 ओवर में 13 रन, एक सफलता इनके नाम है। इस बार विकेट कीपर जब तक गेंद को उठाएंगे, 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज अमन मीना के पास। अमन मीना मिहिर धवन के लिए आसान कार्य नहीं होगा, क्योंकि यहां से नए बल्लेबाज है और ये दोनों बल्लेबाज अभी नए नए क्रीज में पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए, तो यहां पर अपने आप को सेटल करना और स्ट्रोक लगाना आसान नहीं रहेगा। चुनौती जरूर रहेगी, देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके की बल्लेबाजी रहती है दोनों के द्वारा। इस बार लेग स्टंप पे आती हुई गेंद, बल्ले का मुंह जल्दी बंद हो गया था,
लीडिंग एज लेती हुई गेंद कवर की दिशा में गई, जब तक गेंद को उठाए सिंगल के साथ अपना छोर बदला है। ओवर समाप्त। 15 के बाद 130, 4 विकेट के नुकसान पे दिल का स्कोर है। अभी भी 5 ओवर का खेलाना शेष है, 30 गेंदें आनी बाकी है। स्कोर 130। अगर यहां से आने वाली 30 गेंदों से 30 रन और जोड़ते हैं 160 होगा, और 30 गेंदों से 60 जोड़ते हैं तो 190 का स्कोर होगा। तो जो संभावना है 180 से 190 के बीच स्कोर हो सकता है। फिलहाल अभी डगआउट में देखा जाए तो अभी भी 6 विकेट उनके पास मौजूद है, और निचले क्रम के बल्लेबाज भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करने की सलाहियत रखते हैं, और जरूरत है इन दोनों बल्लेबाजों से कुछ बेहतरीन फिनिशिंग टच की, जहां से 190 के आसपास स्कोर बन पाए। 130 रन बने अभी तक 15 ओवर के बाद। 130, 4 विकेट के नुकसान पे। एचएसबीसी के कप्तान तमोजीत के गेंदबाजों ने काफी हद तक वापसी की है। और फील्डिंग भी इन्होंने कमाल की है। और अभी असली पिक्चर आना बाकी है, क्योंकि दूसरी पारी का जब खेल का आगाज होगा तब आपको पता चलेगा कौन ज्यादा बेहतर खेला है। अभी पहली पारी का खेल चल रहा है, यहां से अभी आप इब्तिदा देख रहे हैं, आपको इंतहा देखना बाकी है। और यही क्रिकेट की लोकप्रियता है जो खास बनाती है। आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको उस लम्हे का इंतजार करना पड़ेगा जिस लम्हे में इस मैच का परिणाम आने वाला है। गेंदबाजी में अमन आ रहे हैं। दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग, कॉर्पोरेट का वर्ल्ड कप सीजन 11, 10 साल बेमिसाल रहे इस टूर्नामेंट के। और इस वर्ष देखा जाए तो ये टूर्नामेंट अपनी ऊंचाइयों की ओर एक बार फिर से एक नए रंग रूप के साथ आगे बढ़ रहा है। अमन गेंदबाजी आक्रमण में। मिहिर धवन 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अमन मीना को अभी अपना खाता खोलना है, और लगातार ये अच्छी गेंद है, बिल्कुल मिडिल ऑफ स्टंप पे सीधी रहती हुई गेंद, हल्के से खेला, अपने से दूर खेला, पॉइंट की दिशा में गेंद को ढकेला। वहां पर गेंद को जब तक उठाया जाए सिंगल के साथ मिहिर ने अपना छोर बदला है। स्ट्राइक दे दी है अमन मीना को। अमन मीना अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, 3 गेंदें खेली, अभी तक कोई रन नहीं बनाया। ये इस बार इंतजार किया, गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन पे गेंद जा रही है। नवनीत गेंद को उठा रहे हैं 10 नंबर की जर्सी में। आज इन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की है, फील्डिंग करते वक्त एक कैच भी पकड़ा इन्होंने, और काफी एक्टिव रहते हैं एचएसबीसी के लिए नियमित सदस्य रही है। बहुत अच्छी गेंद थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज को ज्यादा रूम नहीं दे रहे हैं, बड़े स्ट्रोक की दावत नहीं दे रहे हैं कि आप दावत उड़ाएं और बड़े चौके छक्के मारकर स्कोर को तेजी के साथ आगे ले जा पाए। बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। गाड़ी में पड़ा हुआ इस बार कदमों का इस्तेमाल, कॉर्नर बॉल तोड़ने का मौका था, ऐसा लगा, लेकिन तारीफ करने की गेंदबाज की, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट को पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं, चैनल में बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार घुटने पे जाते हुए गेंद को खेला, मिड विकेट की दिशा में गेंद जा रही, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी आ रहे गेंद को उठाने के लिए। 1 रन पूरा किया, दूसरे की कॉल की है, और तेजी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए कोशिश लगातार बल्लेबाज के द्वारा यही है कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाए। पर प्रशंसा करनी होगी गेंदबाज अमन की, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया अभी तक गेंदबाजी की है, बल्लेबाज को फॉलो किया है कि वो करना क्या चाहते हैं। ये अच्छी गेंद, इस बार मिडिल लेग स्टंप पे थोड़ा सा क्रैम्प करने की कोशिश, बड़े शॉट लगाने का मौका दिया नहीं अभी तक इस ओवर में। सिंगल से काम चलाना पड़ा है, सिंगल डबल्स के साथ। ओवर है, और बहुत ही किफायती ओवर रहा है अमन का। 16 ओवर के बाद स्कोर 16 के बाद 135, 4 विकेट के नुकसान पे डेल इंटरनेशनल। अगले ओवर में क्या कुछ होगा, एक बार फिर से मयूर स्वागत है। रनों की रफ्तार पे अगर आप नजर डालें, 16 के बाद 135 रन बने हैं, और यहां से 4 ओवर का खेलाना शेष है, 24 गेंदें आनी शेष है। 16 के बाद 135। A very good shot.
and equally well fielded. We're trying to praise the shot, but that was very good fielding too in the outfield. 16 overs have been bowled. 16.1 now, 136 for 4. On the leg side, it's in the air, but it will fall safe, but and onto the boundary for 4. For one moment, I thought it's actually falling on no man's land, but it has speared both the fielder running in and onto the boundary for 4. Little shorter boundary on the leg side, and the batsmen have tried and capitalized on that side of the boundary. Again, shot, but he was well aware of his crease. The back foot quickly went behind and inside the crease. A gentle appeal towards the square leg umpire, but he'll only walk up to put the stumps back in place. The score is now 140 for 4 in 16.3 overs. And with 6 more wickets to go, and I'm sure that the man in grey and green, they will definitely go hammer and tongs with the sword in hand. They'll have to see the ball like a football, probably won't have like a football. Ball. Coming down the ground, almost York himself will get a single. ये वाला तो था नहीं फ्रेंड्स and what a shot Had a very good shot, half a dozen for HSBC, for Dell, I beg your pardon. And what a shot that is. Not easy to go on the back foot, especially in these conditions when it's very hot and humid. But they have the energy, thanks to Max Protein Bar, that they have done well, and they have put all the bad balls and onto the boundary. $100, 148 for 4 in 17 overs. Bit of an age will rotate the strike. Score moves on to 149 for 4. Just one run away from that 150 runs mark on the board. That would be a very, very pleasing sign here for the team in grey and green. Well on the leg side, he exactly knew where the fielder was, and he knew for sure as the result says it's 4 runs, and 150 is up for Dell is 153 for 4 in 17.2 overs. Being hit on 17 not out of 9, equally accompanied by Aman Mina, 9 not out of 11. The way he played the shot, he honestly knew where he was as the fielder tried to retry, but the ball had other answer onto the boundary for 4. It's the next delivery. Giving himself some room on the offside. Get a single. The temptation always is to take the long handle as soon as you see a boundary, but no rush of blood for the next delivery as he rotates the strike. Plays very, very well. The ball is coming towards us, but there is a fielder to protect the boundary. Just one run. Did very well. He made some room for himself. He probably has much power to clear the boundary, but one run nonetheless. 155 for 4 for Dell now in 17.4 overs.
Plays it fair on Jake's side. To feel that he did very, very well to stop it inside the ropes. Probably the batsman was trying to check with the umpire for a boundary, but I'm sure he did it very, very well to stop it within the boundary line, and will just get a single. It was powerfully hit, no doubt, but the fielder have also done very well to stop it inside the boundary. 156 for 4, one legitimate delivery remaining in the 18th over for HSBC. But I definitely love to see what's the point now here from the bowler, from Aman Rathi. Plays it very well on the leg side again. Gets a single. The sound of the bat is very, very sweet, but the sweetness of the ball in terms of timing was exactly not there, and that will be just a single. That will bring the end of the 18th over. We'll be just back with the score with 2 overs now remaining. Two overs now remaining, but kudos to HSBC. They have able to held up the runs now. At one point, we definitely thought that the score might just be above 190 or probably up to 200 also. But the way they have come back despite some flurry of boundaries and occasional sixes, they have done well, managed to cut the run flow. And the score is now 157 for 4 in 18th over. 12 more legitimate deliveries to go. And probably a quick message from the dugout for the batsman at the non-striker's end. Get off the block very, very quickly as soon as you see the ball being tapped on the onside, on the leg side. It's in the air. Couldn't connect very well. Filter running in, but that will just fall safe. Just in front of him. Probably in the general end of power, and that's exactly what he's signaling from the non-striker's end. Probably a change of a bat or probably a glove, because the sweat probably doesn't allow you to grip the bat very well. Here's the next ball of the 19th over. Oh, the covers of extra cover actually, and on to the boundary for half a dozen. Up goes the signal of the hands of Ashwini Varma on to signal 6 runs for Delhi. And the score will now be 164 for 4 with 10 more deliveries. You never know, just with some more flurries on boundaries and sixes, the score might just inch above 185 to 190. I was talking about the heat, and the heat is already been generated just now with that wonderful extra cover 6 by the batsman. The one now, 25 not out, plays it very, very well on the offside and onto the boundary again. So a 6 followed by a 4. This is magnificent hitting. 10 runs already, and this is immediate pressure. This is immediate pressure for the bowler, for Kapil Mehra. He has already picked up 2 wickets, 2 for 26. Coming down the wicket like a flat tennis racket. He played it very well. Coming back for the second one, and they have run very, very, very well. They have exactly targeted the fielder where they can get some more runs. The ball actually went towards the longer part of the boundary, but and that has actually helped them to come for the second run. The score now moves on to 170 for 4, with 2 more legitimate deliveries to go in the 19th over. A total of 8 balls to be bowled now here from HSBC. Thirteen runs already in this over. But
And Kapil Mehra, he will try and minimize as much runs as possible in these last two balls. That was little slower off the wicket. And the wicket keeper has done well to distort the bails, but the batsman was well aware of his crease there. So one more delivery to be bowled in this 19th over. Score remains on 174 for 13 runs from this Kapil Mehra's over. Here's the last ball of the 19th over. Plays it well and connects very, very well. Half a dozen here. 6 runs. 176 for 4. And that will be the max protein performer for you. And to refresh your memory, what does max protein do? They definitely help you to build strength, to provide you sustained energy, and if you're hungry, it also satisfy your appetite. So max protein, this is your daily dose of energy bar. And what good timing was on that shot to head on to the boundary. 13 runs was of 5 deliveries, make it 19 of the 19th over from Kapil Mehra. So 6 more deliveries to go. And what's in store? The dreadful sight of the batsman. Just 4 wickets have lost. This is what happens when you don't lose your wickets. It helps you to build on and carry on the momentum. Momentum was a very, very key word that was being used by my co-commentator Anwar Siddiqui. And to sum up the last over from of this first innings of this first match will be my Hindi commentator Anwar Siddiqui. शुक्रिया। 19 ओवर के बाद 176 4 विकेट के नुकसान पे आखिरी 6 गेंदें शेष है और मिहिर धवन 37, अमन मीना 12 पे बल्लेबाजी करते हुए मिहिर धवन ने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया है और अपनी टीम की स्थिति को बेहतर बनाया है। आने वाली 6 गेंदें 6 से मिहिर धवन और अमन मीना की जोड़ी क्रीज में मौजूद है। एक अच्छा कार्य करते हुए पिछले कुछ ओवर्स में बढ़िया स्ट्रोक लगाए हैं मिहिर धवन ने और अभी तक इस पारी का अगर आप लेखा जोखा देखेंगे तो सबसे टॉप स्कोरर है, 37 रन बनाए। उसके अलावा अनुराग ने 28 बनाए, कशिश ने 27 बनाए हैं, संचित तनेजा ने 28, नवीन सिंह ने 25 बनाए हैं। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के साथ मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने भी उपयोगी साझेदारियां, उपयोगी पारियां खेली है और अंत में मिहिर धवन और अमन मीना ने वो उत्तरदायित्व तो उठाया अपने कंधों पर जिसकी जरूरत थी। आने वाली 6 गेंदें से आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी करने के लिए प्रणव आए हैं। प्रणव गेंदबाजी की शुरुआत की थी, इन्होंने शुरू में थोड़े से खर्चीले साबित हुए थे, वापस कप्तान ने बुलाया है आखिरी ओवर के लिए। थर्ड बैट बाउंड्री पर एक खिलाड़ी है, कवर और लॉन्ग ऑफ साइड में, ऑन साइड में डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। और ये पहली गेंद मिड विकेट के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, ऑफ स्टंप के बाहर उछाल लेती हुई गेंद पूरी तरह से बीट करते हुए पहली गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है ओवर की। प्रणव ने अच्छी शुरुआत मिली है, पहली गेंद पर कोई रन नहीं आया है। हालांकि दोनों बल्लेबाजों की कोशिश है कि जितनी गेंदें बची हैं, जितने ज्यादा रन बटोरे जा सकते हैं बटोरे जाएं, क्योंकि 180 190 का जो अनुमानित स्कोर था वहां तक पहुंचने के लिए। और ये पहला बढ़िया गेंद, बढ़िया बल्लेबाजी, खराब गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया ग्लांस किया ऑन साइड में, बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा अमन मीना के द्वारा। अमन ने गेंदबाज के अमन ने खलल डाला है। पहली गेंद तो डार्ट करा ली थी, अगली गेंद पर चौके के साथ वापसी करी है बल्लेबाज ने और स्कोर पहुंचा दिया 180 रन। ये पावर प्ले चौका था, मैक्स प्रोटीन पावर प्ले चौका। और इस बार ऊपर डाली हुई गेंद, इस बार गति परिवर्तन किया था, इस बार ठीक से टाइम नहीं कर पाए पर सिंगल लेने के साथ स्ट्राइक दी है मिहिर धवन को, जो कि काफी समय से
क्रीज में मौजूद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग सीजन 11 का ये मुकाबला है। KEI वायरन केबल्स SG विल बिकम रीजन ग्रोमिंग इंडिया, ये टूर्नामेंट के प्रायोजक हैं। सभी को धन्यवाद। और इस बार देखा कि बल्लेबाज इस टू के लिए कमिट हो रहे हैं। शॉट ऑफ गेंद, धीमी रफ्तार से छोड़ी हुई गेंद पूरी तरह से चुके एक और डॉट गेंद के साथ वापसी करते हुए अभी तक अच्छा ओवर घटा है। अगर बाउंड्री को छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के गेंदबाज फर्नम ने अच्छी गेंदबाजी की। पहली गेंद डॉट थी, उस पर कोई रन नहीं आया। अगली गेंद पर चौका और अगली गेंद पर उसके बाद सिंगल और अब डॉट गेंद। स्कोर 181 रन। इस बार कांगो का इस्तेमाल आने देता, उसके गम में बहुत काम किया है हमने। अब जो रोता हूं तो आंसू नहीं आने देता। आखिरी गेंद आनी बाकी है इस पारी की। इस बार फिर से स्टेप आउट करके बाहर निकले, लेकिन भाग्य का सहारा, जिसको तूफान उलझने की आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। जिस बहादुरी के साथ बल्लेबाजी की बल्लेबाज ने, उसी का परिणाम है कि आखिरी गेंद पर चौके के साथ अंत किया है। निर्धारित 20 ओवर में 191 रन का स्कोर खड़ा किया है 4 विकेट के नुकसान में। टॉस के दौरान और पारी के दौरान जिसकी प्रिडिक्शन लगाई थी अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ के साथ, तो वो प्रिडिक्शन सही साबित हुई। 191 रन बोर्ड पे बने हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए जीतने के लिए 192 रनों की दरकार है। टीम HSBC को बनाने होंगे 192 रन। आइए चलते हैं इनिंग प्रेजेंटेशन में, जहां पर खिलाड़ी अपना अनुभव साझा करेंगे इस मुकाबले को लेकर, अपना एक्सपीरियंस और अपनी रणनीति पर बातचीत करेंगे। फिलहाल दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग सीजन 11 आज का पहला मुकाबला शनिवार का दिन HSBC वर्सेस डेल इंटरनेशनल के बीच मुकाबला है। टॉस जीता है आज रीजन, टॉस के बॉस बने HSBC के कप्तान तमोजीत और बिना किसी देरी के उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी के मिले निमंत्रण पर बल्लेबाजी करते हुए दिल के बल्लेबाजों ने के साथ बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 191 रन बोर्ड पे बनाए हैं। जीतने के लिए 192 रन की चुनौती है। और इस टूर्नामेंट में आप देख सकते हैं लगातार स्पॉन्सरों की बड़ी भूमिका रही है। बड़ा अपना उत्तरदायित्व तो निभाया है। दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग विजन ग्रोमिंग इंडिया SG विल बिकम KEI वायरन केबल्स इफको पूर्णता साकारी स्वामित्व एंड मैक्स प्रोटीन पावर पैक बाउंड्री। इस टूर्नामेंट के प्रायोजक आइए हमारे साथी कमेंटेटर मयूर के साथ इनिंग प्रेजेंटेशन के लिए। खिलाड़ियों से इंटरव्यू ले ले दो, कितना क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है? शर्मा है जिन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की आज के मुकाबले की पहली पारी में 4 ओवर में 27 रन देकर एक सफलता हासिल की है। ऐसे मौके पर जब गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजों ने आक्रामक दृष्टिकोण अपनाए थे, इन्होंने अंकुश लगाया। हालांकि इनके खाते में एक जरूर है, लेकिन गेंदबाजी बहुत अच्छी की है इन्होंने। स्वागत है आपका। क्या लगता है 192 रन बनाने हैं जीतने के लिए, और इस पिच पर बल्लेबाजी करना जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने अच्छे स्कोर किए हैं, आपकी टीम को क्या लगता है 192 रन कितना आसान रहेगा ये मुकाबला? First of all, Dell काफी अच्छा खेला। I think they capitalize their wickets और बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर बना दिया। But I think 191 is a chasable target अगर हम विकेट के ऊपर स्टे करेंगे। जैसे हमने देखा है कि थोड़ी सी अगर हम गलत बॉल डालते हैं तो हमें रन पड़ता है। अगर हम अच्छे एरिया से बॉल डालेंगे तो खेलना डिफिकल्ट है। बट अगर उन्होंने बनाया तो ऑब्वियसली हम भी ट्राई करेंगे अपना बेस्ट देने में, क्योंकि मॉर्निंग में ड्यू भी था, थोड़ा डिफिकल्ट था। स्टिल दे स्कोर्ड 191। बट अभी तो पिच फ्लैट है और हल्का सा टर्न है। बट या वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल चेस। हमने पहले भी कई बार चेस किया। आपको आपके बल्लेबाजों के ऊपर ये विश्वास है कि आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अच्छा स्टार्ट देंगे इस
मुकाबले की दूसरी पारी में 192 रन के लिए आपको शुरुआत बहुत अच्छी मिलनी जरूरी है। देखिए नई बॉल इस पिच पे बहुत अच्छा है और हमारे बैट्समैन हैं जो काफी अच्छा खेलते हैं स्टार्टिंग में, तो हम एक्सपेक्टिंग कि इन फर्स्ट 6 ओवर्स हम अच्छा स्टार्ट करेंगे और आई थिंक फिर जो बाकी टीम है सिमिलरली कैपिटलाइज करेगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो अंदर जाएगा उसको पूरा खेलना पड़ेगा, मतलब बाहर आके आप मैच नहीं जीत सकते, तो अंदर से ही हमें खेलना पड़ेगा। प्रदीप स्वागत है आपका। 192 रन बनाने हैं। नवीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग बॉलिंग की है और अब बल्लेबाजी की बारी आई है। 192 रन किस तरीके से देखते हैं इस सतह पर, इस मैदान पर? 191 बहुत आराम से चेस हो जाएगा, हमारी टीम के पास वो कैपेबिलिटीज है और अगर कंसीडरिंग द पिच जो सुबह थी और अब के पिच में जो बॉल अब थोड़ी आ रही है अच्छी, तो और ग्राउंड भी दोनों तरफ छोटा अगर देखा जाए तो स्क्वायर बाउंड्री जो है छोटी है और हमारे पास बैट्समैन है काफी अच्छा, वो चेस कर लेंगे बहुत इजीली। आपको आपको लगता है कि अब चेस करते वक्त ये पिच और भी बेहतर बल्लेबाजों के अनुकूल हुई है और जिस पे बॉल तेजी से आ रही बैट पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा इजी रहेगा आपकी नजर से? राइट 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 बिल्कुल। जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया इस पर पिच और अच्छी बिहेव करती चली गई, तो अच्छा है, बड़े इजीली से तो इजीली हम चेस कर लेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं बुलाना चाहूंगा वीर धवन को, प्लीज। वीर धवन, दिल के लिए वीर धवन ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। हमारे साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ से मैं चाहूंगा कि आप भी आए, हमारे साथ ज्वाइन हो। वीर धवन ने बहुत ही अच्छा फिनिशिंग टच दिया। आखिर में जिस तरह की पारी की जरूरत थी वो इन्होंने खेली है। अपने साथी बल्लेबाज के साथ 191 रन तक अपनी टीम को पहुंचाया है। क्या लगता है 191 रन 20 ओवर के मुकाबले में कितना अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद? हम एक्चुअली लाइटली तो नहीं ले रहे ना, अभी ऐसा कुछ स्कोर हमने दिमाग में रखा है, बट अभी विकेट का हाल और जैसी हमारी बॉलिंग है एट पार ही समझेंगे। पहले 6 ओवर अच्छे फेंकने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ही हम अच्छा गेम में आ पाएंगे वापस। आपको लगता है कि ये विकेट पहले से ज्यादा बेहतर हुई है बल्लेबाजी के लिए? नहीं, विकेट तो पहली इनिंग के मुकाबले थोड़ा बेकार हुआ है, पैचेस बन गए हैं, बॉलर के पैरों के भी निशान हैं, तो बेनिफिशियल हमारे लिए रहेगा। बाकी अभी पहले 6 ओवर वही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, आपके नजरिए से, क्योंकि ये पावर प्ले काफी अहम रहने वाला है जहां पर 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहेंगे, ऐसे में आपकी गेंदबाजों की भी परीक्षा रहेगी। हाँ जी बिल्कुल, हमारे पहले 6 ओवर में जो भी हमारे बॉलर बॉल डालेंगे उनको कंटेन करके चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैच निकलने में 1-2 ओवर ही लगते हैं। T20 का गेम ऐसा ही होता है। मिडिल ऑर्डर में आकर के आपने एक अच्छी पारी खेली है, कितना अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं इस पारी को देख? एक्चुअली पिछले 2-3 मैच से मैं नहीं कर पा रहा था कन्वर्ट अपने स्टार्ट्स को, और ओपन से मेरे को मिडिल ऑर्डर पे भी डाला गया है, तो फिर आज अच्छे रन बने हैं तो बेटर फील हो रहा है डेफिनेटली। चलिए, हम मैं चाहूंगा कि मयूर के मन में अभी जहन में भी कुछ सवाल हैं, आपसे वो पूछना चाहते हैं। First of all, your face actually, for the camera, your face actually looks like Riyan Parag. Yeah? The yes, I'm actually from Assam, and being a fan of Rajasthan Royals, the first look, of course, Riyan Parag has done very well, and you have also done very, very well. Your first thought when you actually saw the wicket, and did you have a set plan, or it was like you wanted to build a partnership and then carry along? No, actually, when I went on the wicket, I basically watched a few balls initially. I wanted to middle the balls initially and then go for big shots. And your big shots have actually paid dividends. We have all, at times you can see the ball; it went so fast. We were actually talking before the start of the match that the last green outfield, we actually the captain predicted around 180, 190. You got 191 actually. Yes, definitely the other team definitely bowled some extras too, but I concluded the wicket was not that good initially, but afterwards I had a few good shots in that, and the score reached 190 odd runs. Of course, what we were also discussing the left and right, and I'm sure your colleagues must be very. Just last one question: lefty righty combination. We have, it's so important to have a left hander in your side, and how much does it help in your, probably in your, when you do your net practice, not every side probably has a very good lefty, but your this left and right hand combination, they definitely stitch a very good partnership. This wasn't planned actually initially, but yes, always lefty righty combination helps because the bowler has to execute the plans again when a lefty occurs on the strike.
So yeah, lefty righty has a difference every time it is there. Great. Have some max protein bars. Energize yourself. Keep that Rian Parak smile on your face, and I wish you all the luck. Yeah. Cheers. Thank you. और अगर आप बात करें आज के दिन वी जॉन मैक्सिमम सिक्स अवार्ड की रेस में भी मिहिर धवन ने अपने आप को ऊपर रखा। 4 छक्के लगाए हैं इन्होंने आज के इस मुकाबले की पहली पारी में। 47 रन की पारी खेली, महज 19 गेंदें खेली है। अगर आप इनकी पारी को देखें, जिस तरीके से आकर इन्होंने फिनिश किया है, वो कमाल की पारी रहेगी, यादगार पारी रही है। आखिरी में आए और बल्लेबाजी करते वक्त 19 गेंदों में 47, 3 चौके 4 छक्के लगाए हैं। जिस तरीके से फिनिशिंग टच की जरूरत थी उन्होंने दिया है। Yes, yes. Finishing touches are so important, and that's what I was talking when I was just about to start the 19th over. They've just lost 4 wickets, and they've actually, started with a very good platform. If you lose probably 6 wickets or 7 wickets, the pressure is to either should there's this double game happening on your mind. Should you protect a wicket? Should we go for the lofted shots? But this partnership, the initial partnership, actually helped them to build up a very good run, and eventually they scored 191. And which I'm sure would be a very good one to for the bowlers to defend. But you never know what are the plans for the man in red and blue. But I'm sure whatever is the result, we're going to have a very very good finish. अगर आप बैटिंग कार्ड पे नजर डालें देखें तो सभी बल्लेबाजों ने एक उपयोगी पारियां खेली हैं। बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है सभी बल्लेबाजों को। अगर आप देखें टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज नवीन ने 25 रन बनाए, 17 गेंदें खेली हैं, 2 चौके 2 छक्के लगाए इन्होंने और 25 रन बनाए थे। एक अच्छा स्टार्ट मिला था, ये भी बड़ी पारी खेल सकते थे लेकिन 25 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद संचित ने भी 28 बनाए, कशिश ने मध्य क्रम में अगर 27 बनाए, अनुराग ने 28 बनाए। सभी बल्लेबाजों ने एक अच्छा स्टार्ट, जो एक बैटिंग ऑर्डर में जिस बल्लेबाजी की जरूरत होती है वो आज दिल के बल्लेबाजों ने किया है। और बहुत बड़ी पारियां तो नहीं खेली लेकिन हाँ इतनी जरूर खेली जहां से 191 का स्कोर बोर्ड पे नजर आ रहा है। क्या लगता है, ये एक अच्छी बल्लेबाजी, एक अच्छा बैटिंग कॉम्बिनेशन नजर आया है? Yes. To put your own शायरी in action, बूंद बूंद से सागर बनता है. I'm sure every drop contributes to build up the ocean, and not probably every boon from the batting probably not be a 50 or 60, but those particular droplets have built up 191. So yes, so I think the questions have been answered. They were seeking some, probably at the tops we were thinking, was it a good decision to probably field first or bat first, but that has actually paid dividends. 191 on the board again, same thing. Now it's up to the bowlers to go and defend the total. You have the bowling. और मैं अब बॉलिंग की बात करना चाहूंगा जिन गेंदबाजों ने गेंदबाजी की। कप्तान तमोजीत ने इस पारी में अगर देखें तो आप 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, तो अतिरिक्त गेंदबाजों के साथ जो उनके पास गेंदबाजी में विकल्प थे उसका भी इस्तेमाल कर। और शायद कारण ये भी रहा कि शुरू में जो गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजों ने आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया। आप देखें शुरू में प्रणब ने अब तक प्रणब ने 3 ओवर में 32 रन देकर 3 ओवर में 32 रन दिए, कोई सफलता नहीं मिली। जतिन ने 2 ओवर में 20 रन दिए, महंगे साबित हुए थे। कपिल मेहरा ने 4 ओवर में 34 रन देकर 2 सफलता हासिल की। इन्होंने शुरुआत में जो विकेट दिलाए हैं टीम एचएसबीसी को, कपिल मेहरा ने दिलाए हैं, तो वहां से एक मैच में एक जरूर मोड़ आया था कि लग रहा था कि शायद एचएसबीसी इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी करेगी। लेकिन फिर से तारीफ करनी होगी बल्लेबाजों की जिन्होंने रुककर विकेट पर अच्छी साझेदारियां की हैं। That's what I was actually talking about. You've actually said the right thing. The ball wasn't coming initially very well to the bat. They have played the waiting game very well. The bounce was still uneven with the introduction of the spinners also. They were playing on the back foot, but they have well played to negate the singles and the couples. Probably we are just probably minutes away from the live action. But to finish off your thing on spinners, on the bowlers, I think bowlers probably could have done a better job. But in these conditions, the batsmen actually have predicted a wicket very well. And now probably it's up to the batsmen for the man in red and blue to deliver and see how they can chase the target. देखना होगा कि दूसरी पारी का जब खेल का आगाज हो रहा है, तेज गति के गेंदबाज किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, खासतौर से शुरू के 6 ओवर में पावर प्ले में, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट देना बहुत अच्छा स्टार्ट देना बहुत जरूरी रहेगा एचएसबीसी के लिए। 192 रन का लक्ष्य है और इधर तैयारी हो चुकी है। टीम डेल मैदान पर नजर आ रही है, दोनों ऑन फील्ड अंपायर तैयार है और इधर हमारी कमेंट्री टीम तैयार है। मैं कमेंटेटर अनवर सिद्दीकी और अपने साथी कमेंटेटर मयूर बैरुआ के साथ चलता हूँ सीधा लाइव एक्शन के लिए। Yes, thank you Anwar. Live action to start of this second innings of the Dafa News Pro Corporate League.
192 is the target for HSBC, and both the batsmen have just had some bowling drills versus the man in the grey and green. दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग सीजन 11 के आज के इस मुकाबले में एचएसबीसी वर्सेस डेल के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था एचएसबीसी के कप्तान दमोजीत ने, और पहले बल्लेबाजी करते हुए डेल ने निर्धारित 20 ओवर में 191 रन बनाए हैं। जीतने के लिए 192 रनों की चुनौती का स्वीकार करने के लिए समय दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज एचएसबीसी की ओर से पारी का आगाज करने के लिए पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक लेंगे अमन राठी, और उधर गेंदबाजी करने के लिए तुषार भाटिया तैयार है रिवर एंड से। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप नजर आ रही है, गली पर एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। पॉइंट है, पॉइंट कवर मिड ऑफ साइड पे, ऑन साइड पे मिड ऑन शॉर्ट मिड विकेट और डीप स्पेल एक बाउंड्री पर एक खिलाड़ी। एक 192 रन बनाने हैं। सामने एक बड़ा लक्ष्य पर, जिस तरह की यहां पर आउटफील्ड है, तेज आउटफील्ड है, मैदान बहुत ही रास आता है बल्लेबाजों को। ये पिच किस तरह की बिहेव करेगी देखना अहम रहेगा। तुषार भाटिया हमेशा की तरह और ये मुकाबले की दूसरी पारी की पहली गेंद तुषार भाटिया की गेंद बाउंड्री लाइन पर फील्ड की जा रही है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पहली गेंद पर 2 रन लिया है दोनों बल्लेबाजों के बीच। अच्छी दौड़, अमन राठी और रोहित भारद्वाज बतौर सलामी बल्लेबाज ओपन करते हुए इस मुकाबले की दूसरी पारी में एचएसबीसी के लिए 192 रन बनाने हैं जीतने के लिए। तुषार भाटिया गेंदबाजी कर रहे हैं। दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग सीजन 11 192 रन बनाने हैं।
ये अच्छी गेंद लेंथ बॉल पड़ने के बाद अच्छा उछाल देखने को मिला। फंजो केवल जाते हुए गेंद को हल्के हाथों से खेला। ऑन साइड के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड कर लिया। रन की गुंजाइश नहीं। आज दिल के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की। मेड धवन ने 47 रन बनाकर नाबाद रहे। 19 गेंदों पर 3 चौके 4 छक्के लगाए उन्होंने। ये ऊपर डाली गेंद अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं तुषार भाटिया। जाते हुए बल्लेबाजों के पांव शुरू में चलते नहीं है। फुटवर्क उतना अच्छा होता नहीं है और ऐसे में गलती करने की संभावनाएं रहती है। अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और उतनी ही चालाकी से बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। अमर राठी ने सिंगल लेकर अपना छोर बदला है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन नजर आता हुआ ये एक आदर्श जोड़ी मानी जाती है। आपके पास विकल्प होते हैं। आपके पास इस तरह के बल्लेबाज मौजूद हो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बैट्समैन हो, तो आपकी कोशिश होती बतौर कप्तान कि आप इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ जाए और वो कार्य किया है कप्तान तमोजीत ने अपने दोनों ही ओपनर्स को एक संदेश दिया होगा। रोहित भारद्वाज हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेते हुए अच्छी शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं। ये अच्छी गेंद है, कांटा बदलती गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए तुषार भाटिया भी काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है। काफी वर्षों से लगातार अपनी टीम में नियमित सदस्य रहे हैं। अपनी टीम को अच्छी शुरुआत देते रहे हैं तुषार भाटिया। ये गेंद अगर आप देखें तो पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर लहराती हुई गेंद का पीछा अवश्य किया था रोहित भारद्वाज ने, पर किस्मत वाले हैं कि बल्ले का सेहरा नहीं लिया क्योंकि एक स्लिप में खिलाड़ी भी मौजूद है। ऊपर डाली हुई गेंद फिर से खेला था पर विश्वसनीय स्ट्रोक नहीं कहा जाएगा। चोट जरूर बदला है रोहित भारद्वाज ने। अच्छी गेंदबाजी करते हुए तुषार भाटिया। दोनों ही बल्लेबाज अमर राठी तैयार है। ये बॉलर के बगल से गेंद को खेला है। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। रिस्क जरूर लिया था और सामने वाले बल्लेबाज के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी। अपने आप को बचाया और बाउंड्री में डील की है। इस गेंद पर 4 रन के साथ दूसरी पारी की पहली बाउंड्री आती हुई अमर राठी के बल्ले से इंतजार खत्म हुआ है। पहले ओवर के बाद स्कोर 8 बिना किसी नुकसान के। आप देखें दोनों टीमों की वैसी ही शुरुआत मिली है। पहली पारी में के खेल को अगर आप देखेंगे तो पहले ओवर में भी 8 रन आए थे और दूसरी पारी के खेल के पहले ओवर में 8 रन आए, यानी कि मुकाबला बहुत ही बराबरी का है। ये कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों दिग्गज टीमें हैं और कोई भी किसी को किसी तरह की छूट देने की मूड में नजर नहीं आ रहे। आजादी देने का कोई यहाँ पर मौका देना नहीं चाहते। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। कौन है भैया? राहुल पराशर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक और तजर्बेकार अनुभवी गेंदबाज राहुल पराशर के हाथ में गेंद नजर आ रही है। रोहित भारद्वाज स्ट्राइक ले रहे हैं। पहले ओवर के बाद 8 रन। ऑफ स्टंप के बाहर ऊपर डाली गेंद। गेंद खेला था पर बल्ले का बॉटम पिच से लड़ा था और हल्की सी अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास से कम। ऑफ स्टंप के बाहर एक चैनल में गेंदबाजी करने की शुरुआत मनसा जाहिर की है गेंदबाज पराशर ने। दूसरे ओवर की शुरुआत की है। 192 रन बनाने हैं जीतने के लिए। लेकिन उनके पहुंच से काफी दूर थी। करीब 10 रन दूर से गेंद लाएंगे बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ इसको दोनों अंकों में प्रवेश कर चला है। 12 रन बिना किसी नुकसान के। रोहित भारद्वाज इस चौके की सहायता से 5 पर पहुंचे हैं। फिर से ऊपर डाली हुई गेंद। टाइमिंग अच्छी नहीं है पर एलिवेशन है, लंबाई मिली है।
गेंद बाउंड्री लाइन के करीब जब तक फील्ड की जाए, दूसरे रन की कॉल की है, आसानी के साथ दूसरा रन मिलेगा। पावर प्ले का यही फायदा रहता है, अगर आप एक बार मोमेंटम को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर सामने वाले गेंदबाज के सामने चुनौती रहती है। बहुत अच्छा स्ट्रोक तो नहीं था, पर क्योंकि 30 गज दायरे के अंदर ज्यादातर खिलाड़ी है, दायरे के बाहर कोई नहीं है, यही रियल रूट दिखाने का मौका है बल्लेबाज के पास। दायरे का फायदा उठाने की कोशिश रहती है हमेशा बल्लेबाजी टीम के द्वारा। ये कनेक्शन अच्छा है, पर खिलाड़ी हाथों में गेंद, रन की गुंजाइश नहीं है और काफी अटैकिंग अप्रोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं रोहित भारद्वाज। भले ही अभी तक बहुत अच्छे से मिडिल न कर पाए हो गेंदों को, लेकिन उनकी सोच साफ है कि अगर उनके रडार पे गेंद आएगी तो उस पर बड़े शॉट देखने को मिलेंगे। 14 रन बिना किसी नुकसान के। दो ये काफी ज्यादा बाहर है, अतिरिक्त रन मिलता हुआ, अतिरिक्त गेंद भी करनी पड़ेगी। 15 रन बिना किसी नुकसान के। इस मैदान पर जो औसतन स्कोर होता रहा है, देखने को मिलता रहा है, वो देखने को मिला एक बार फिर से। 191 रन। ऑफ स्टंप जो बाहर, बॉलर के सर के ऊपर से खेलने की कोशिश थी, इस वजह से बहुत ज्यादा पहले से जब आप सोच लेते हैं, आपका प्लान होता है, तो कई बार आपको इस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आप गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी करें, आप नेचुरल बल्लेबाजी करेंगे तो आपका मोमेंटम, आपका बॉडी, आपका पांव उसी अंदाज में चलेगा और आप ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। ऊपर डाली हुई गेंद एक बार फिर से बल्ले का सिरा लेती गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में, बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को रोकते हुए अच्छा एफर्ट डाला है दीप के खिलाड़ी ने। इस तरह की फील्डिंग का स्तर जरूर साथी खिलाड़ियों का भी हौसला बुलंद करता है। बढ़िया फील्डिंग की है और इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही उम्दा शुरुआत, 8 की रन औसत से रन बनते हुए, और आप देखें तो 9 रन प्रति ओवर की रन औसत से रन बना रहे हैं। और जब शुरुआत में आपके पास अगर 8 रन 9 रन प्रति ओवर की रन औसत से रन बन रहे हैं और विकेट अगर आपके हाथ में है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी। अगले 2 ओवर में क्या कुछ होगा माइक्रोफोन पर दूसरी पारी में एक बार फिर से मयूर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद अनवर, अनवर सिद्दीकी। आपकी बुलंद आवाज से मैं भी प्रभावित हो गया। I'm trying to put those words as much as possible. Don't try. But don't try, yes. Continue, Tushar. So Tushar will continue the attack for Dell. 16 for no loss. It's in the air, top edge, fielder, and that's the first wicket down here. As soon as my co-commentator munches the max protein bar, there's the wicket on the ground, and celebration time for the man in green, and why not? They have got the first wicket, and the column will now say 16 for 1. Dejected looking batsman will have to go back to the pavilion. He was trying to heave it on the leg side, but probably hit the ball milliseconds before, and that allowed the ball to take the top edge and safely pounced by the man at mid-on. So first wicket down for Hsbc, chasing a target of 192 versus Dell. And now jersey number 10 reminds me of the great Sachin Tendulkar. Jersey number 10, and he walks in like, man, with so much elegance. What can he deliver? What's the management think tank? We'll soon find out as jersey number 10 just walks out with to join his partner. The scoreboard says 16 for 1. Jersey number 10, Navneet Sharma walks in to bat, and he'll be joining Aman Rathi, who is batting on 7 not out of 4 deliveries.
And Tushar Bhatia, 1.1 over. He has conceded 8 runs, all right, but he has managed to give the first breakthrough for his team, Dell versus HSBC. And Navneet Sharma, all in readiness to face the first ball from Tushar Bhatia for his Chelly. Very good ball outside off stump. No footwork again. Was just trying to slash it through the covers. Couldn't connect it. The bat and the ball connection was millimeters away. But you need to check what you're playing. This is the very first ball that you're facing. And you have already seen how the wicket is behaving while you're fielding. But probably take probably some couple of balls and then you can probably hit them in shots in the air towards the man at mid-off. No run. The score still remains 16 for 1. And yes, we're just talking about building a good partnership. It was happening, but a small mistake, a small error in judgment while playing at the leg side, and the first wicket fell down. Defended very well. Back to the bowler. Respects him. Middle and off the angle. Outside off stump. He's a lefty, mind you. So the angle will definitely go away towards. They've done very well to put a sleep in action because the edge can easily fly away and thick and fast. So that sleep will definitely come into play. So the wicketkeeper is actually not alone. I'm really happy to have him in company. Little bit in the air, but there is a protection at sweeper cover. He'll rotate the strike. Score moves on to 17 for 1 with one legitimate delivery remaining in the third over from Tushar Bhatia. Been a very economical over. First ball produces a wicket, then a series of dot balls, a single just now. He'll be very proud of himself of how this second over of his spell has gone until now. 17 for 1 in exactly equal number of deliveries. 17 of 17 balls for HSBC. With one ball now remaining. Here's Tushar Bhatia. In the air, plays it so well, and the fielder will just be a spectator. 2 bounces onto the boundary. 4 runs to finish the proceedings here. 21 for 1. At one time, it looked as if the ball had the legs to carry all the way to the boundary, but actually just 2 bounces. Nonetheless, it's 6 minus 2, 4 runs, and the score will now say 21 for 1 at the end of 3 overs. I was praising this over with a wicket and 1 run, but the finish to the proceedings of the third over was not very welcoming. A 4 to finish the over, 5 runs and a wicket of the last over. And Rahul Parasar will continue his second over of his spell. He has given 8 runs of 1 over, still to get a wicket. And I'm sure his captain will join him to produce those crucial deliveries. If not wicket taking, at least try and be economical. That is also very important. They have runs to play here. 192 is the target for HSBC, so they definitely have runs on the board. The batsmen have done very well. The onus is now on the bowler. They have started off very well. 1 wicket already in the third over. So the momentum is there, the motivation is there. It's all about bowling in that correct line and let the channel outside off stump. Put your fielders in place strategically. Do something which will keep your bowler and the fielders engaging. Here is the first ball of his second over. Swung, but he taken on the full. Plays it very well. Half a dozen for HSBC. Twak
is the sound of the bat when the ball hit the middle of the bat. And that sound generally produces humongous runs, and this time half a dozen for HSBC, for the man in blue and red. He'll be very, very happy with the way he has put that shot on. He took it on the full pressure immediately here for हिमांशु बॉल देख बेटा Rahul Parasar. दूसरे ग्राउंड में गई है सेकंड ग्राउंड में 5 more deliveries remaining. First ball already 6, and ये कुछ बोलते ही नहीं है gives immediate pressure on the bowler. The score is now 27 for 1 in ग्राउंड में जाती है ना 3.1 overs. ठीक है गुड वेरी गुड A target of 192. So it's important to get the singles, the doubles. You know all right that you have runs to play, but you also have to keep your eyes on your net run rate. The sooner you can finish the match off either the bat or the ball, the better it will help you with your net run and compete among the other teams in contention for this Dafa News for Corporate League. Thank you to our sponsors also, Zone, IFCO, KI Wires, and our protein partner, Max Protein. As soon as my co-commentator Anwar, he had a crackle, there went the wickets. Outside off stump, cuts very well towards Sudakawa. One single. I exactly don't know how many protein bars they had during the innings break, but we have seen some runs. We have already seen a wicket. So why not? It's not only the drinks, not only the liquid form does wonders, but the solid form in the form of bars does a lot of job for you. Score is now 28 for 1 in the 3.2 overs for HSBC. Aman Rafi will be on strike, the lefty. On the leg side, in the air also. Who's underrated? The fielder says it's mine, and he takes it. For a moment, we thought there might be a miscommunication of will be done. What the bowler said, it's yours, and he respected the bowler and took it very well. Second wicket down here for the man in red and blue. He'll be very, very disappointed. This lefty was meant to be there to upset the fielding combination, but all he managed was to hit the ball high in the air and the safe hands of the fielder running in from mid-wicket. Man in grey and green, they'll celebrate. Both the batsmen, they were trying to hit it on a leg side, managing only to get a top edge. This time the timing was better, but the result was a wicket. 2 wickets down, and the score is now 21 for 2. A very, very slow walk back to the pavilion. 28 for 2. The walk from the batsman is so slow that the other batsman has already reached the wicket, but he has questions in the mind. Why did I hit that shot? But that's what pressure does, probably. 192 to achieve, and you are trying to escalate your run momentum, but have to keep those all behind. It's a team sport, and I'm sure the incoming batsman, he'll have his task now cut out, because it's going to be a challenge now. It's
also to smell fresh. So yes, back in business, 28 for 2 in 3.3 overs. Navneet Sharma 8 not out of 6. Kapil Mehra has just joined him. It's not very hot today, but it's definitely very humid. You can feel the gloomy weather. Played it very defensively. Not right to the pitch of the delivery. He waited for the ball to come, but glided the ball towards cover. And the score remains on 28 for 2 in 3.4 overs. Two more legitimate deliveries remaining in the fourth over from Rahul Parasar. One for 15 of his 10 deliveries. Plays it very well. Will it go to the boundary? No, the fielder does it very well. He was, after hitting Kapil Mehra, he actually probably just thought the ball would go towards the boundary. But the fielder did it very well to retrieve it back to the bowler. Gets off the mark, Kapil Mehra. One of two deliveries. The score moves on to 29 for 2. One more ball to be bowled in this fourth over. And the strike is on to Navneet Sharma. 8 not out of 6. Last ball. Plays it very well. There is a protection. And he did very well. Will get a single and that will finish the over. 4 overs have been bowled. It's now 30 for 2 for HSBC, chasing a target of 192 versus Dell. And for the next couple of overs, it will be the voice of my co-commentator Anwar Siddiqui, who's refreshed after having the Max Protein bar. And he'll have Anwar Siddiqui, it's your call now. The ball is on your court. शुक्रिया मयूर 4 के बाद 32 विकेट के नुकसान पे एचएसबीसी पहले 2 ओवर में 16 रन से कोई क्षति नहीं, लेकिन अगले 2 ओवर में तस्वीरें बदली हैं और दोनों ओपनर्स पवेलियन में नजर आ रहे हैं। अब नवनीत शर्मा और कपिल मेहरा की जोड़ी क्रीज में मौजूद है। जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। अपनी टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाली गई, अच्छे स्टार्ट की उम्मीद थी। पहले 2 ओवर में कोई विकेट नहीं गंवाया था, लेकिन तुषार तेवी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि बहुत अनुभवी गेंदबाज, इनके पास वैरायटी है, क्वालिटी बॉलर है। अपनी गति पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, अपनी लाइन और लेंथ पर बहुत विश्वास है इस गेंदबाज को। इकॉनमी रेट पर इनके नजर डाले, बहुत अच्छी इकॉनमी रेट रहती है और स्थितियों का जायजा लेते हैं, उसके बाद अपने आप को माहौल में ढालने का प्रयास करते हैं तुषार तेवी। अभी तक बहुत ही बढ़िया लेंथ हिट की है इन्होंने, अच्छे चैनल पे गेंदबाजी की है तुषार तेवी ने। इस बार थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ, लगातार बल्लेबाज की परीक्षा लेते हुए जब एक बार विकेट मिल जाता है गेंदबाज को तो हौसला बुलंद हो जाता है। जो मन में भय होता है, डर होता है, वो खत्म हो जाता है। फिर आप बड़े हुए जोश उमंग के साथ गेंदबाजी करते हैं, फिर चढ़कर गेंदबाजी करते हैं। वही वो लम्हा होता है गेंदबाज के लिए जो उसे और ऊर्जावान बनाता है। ये ऊपर डाली हुई गेंद बिल्कुल मिडिल ऑफ स्टंप पे गेंद, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी उठाएंगे, सिंगल लेने का मौका है नवनीत शर्मा के पास। स्ट्राइक रोटेशन बहुत अहम रहेगा इस पारी में, क्योंकि यहां पर अगर आप डॉट गेंदें खेलेंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। और तुषार तेवी और राहुल पराशर ने जिस लेंथ पर गेंदबाजी की है, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाया है, उनका यही प्रयास है कि ज्यादातर गेंदें डॉट कराई जाए। रिक्वायर्ड रेट बढ़ेगी, गलती करने के चांसेस बढ़ेंगे। एक बार फिर से उंगलियां फेरी थी। आपके पास वैरायटी है, क्वालिटी बॉलर है, चेंज ऑफ फेस करने की काबिलियत है आपके अंदर। आप
कामयाब गेंदबाज रहते हैं, पर इस मुकाबले में जो ऊर्जा नजर आई है वो मैक्स प्रोटीन की वजह से आई। मैंने तो जायका लिया है, टेस्ट लिया है, बहुत ही स्वादिष्ट और दमदार मैक्स प्रोटीन नजर आई। इस बार ऑन साइड में हल्के हाथों से खेला है। आपको इसमें कई क्वालिटी आपको मिलेगी मैक्स प्रोटीन की। सारा प्लांट बेस्ड, ये सभी प्लांट बेस्ड है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें ज्यादातर नेचुरल चीजें आपको मिलेगी। और मैंने उसका जायका चखा, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप भी चखें, एक बार ट्राई करें, फिर आपकी आदत बन सकती है। इस बार पैड के अंदर से होती है गेंद। तुषार किस तरीके से बल्लेबाज को फॉलो कर रहे हैं, कमाल की गेंदबाजी की है तुषार भाटिया ने। शिकंजा कसने की पूरी कोशिश की है दिल के गेंदबाजों ने, और हमेशा की तरह तुषार ने अपने स्पेल को बेहद शानदार ढंग से शुरू किया है। 3 ओवर की अभी तक इन्होंने गेंदबाजी की है और पारी के 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 32 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। तो लड़ाई तो काफी बेहतर लड़ी अभी तक डेल के गेंदबाजों ने, पर यहां पर काम आसान अभी तक नजर नहीं आया। नवनीत शर्मा के पास क्षमता है बड़ी पारी खेलने के लिए, जाने जाते बेहतरीन ऑलराउंडर है। कपिल मेहरा उनका साथ निभाने के लिए आए हैं। ये दोनों को एक साझेदारी बनाने की जरूरत। गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है, विशाल आए हैं गेंदबाजी आक्रमण पे। पहला बॉलिंग चेंज, दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग सीजन 11। इससे पहले 10 साल बेमिसाल रहे हैं इस टूर्नामेंट के। कॉर्पोरेट क्रिकेट के जो हिस्ट्री उसको अगर उठा करके देखेंगे, आपको कई ऐसे लीजेंड खिलाड़ी आपको मिलेंगे इस टूर्नामेंट में खेलते हुए, जिन्होंने अपनी एक ख्याति प्राप्त की है। बड़ी कहानी रही उन खिलाड़ियों की। और इस सीजन जब 11वें एडिशन की शुरुआत हुई है तो एक नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरे हैं। कईयों की उम्रों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इनके जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। यही तो पहचान है टीसीएल की। और ये शॉट गेंद के साथ स्वागत किया है। करीब आने से चलता है शख्सियत का पता, जमीन से चांद भी छोटा दिखाई देता है। कपिल मेहरा के जैसे ही रीच में गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, और जबरदस्त प्रहार किया। गेंद बाउंड्री के बाहर नजर आई 4 रनों के लिए। स्कोर 36 और 2 विकेट के नुकसान पे। कपिल मेहरा को हाथ खोलने का पूरा मौका मिला था, इतना समय था बल्लेबाज के पास कि अपने आप को पोजीशन मिलाए और मनचाही जगह स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए हैं। विशाल की एक और शॉट ऑन गेंद, इस बार पुल किया है गेंद जा रही विकेट की दिशा में। खिलाड़ी गेंद के पीछे दर्शक की तरह सिर्फ गेंद को लाने का काम करेंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और चौके के लिए। लगातार बाउंड्री में डील कर रहे हैं कपिल मेहरा, रनों की औसत को बेहतर कर रहे हैं। जो दबाव बनाया था पिछले 2-3 ओवर में तुषार भाटिया ने, उस दबाव से बाहर निकालने की कवायद चल रही है कपिल मेहरा के द्वारा। और एक अच्छी सोच है, जब आपको ढीली कमजोर गेंद मिले तो आप उस पर अटैकिंग अप्रोच दिखाएं। जब आपको अच्छी गेंदबाजी हो रही हो तो आप उसका सम्मान करें, उसे संभालें, अपने आप को सुरक्षित रखें। यही वक्त की नजाकत होती है। और इस ओवर में स्वागत किया है, अच्छी शुरुआत मिली है। एक और शॉट है, आते हैं आने दो, ये क्या ले जाएंगे। जब मैं डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। मैक्स प्रोटीन पावर पैक बाउंड्री लगती हुई 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। मैक्स प्रोटीन की ये ताकत, ये पावर है, आप खाएंगे तो ऊर्जा आपके रग रग में दौड़ेगी। इस तरह से धमनियों में, शिराओं में वो धारा बहती है, उसी तरीके से मैक्स प्रोटीन की वो पावर नजर आई है इनकी बल्लेबाजी में। 3 लगातार चौके जड़े हैं। कपिल मेहरा ने स्कोर पहुंचा दिया है। कितना स्कोर हो गया भाई? 46 रन।
पर इस बार दिशा भटकी है, दिशा से भटके लेग स्टंप के बाहर। ये ओवर महंगा साबित होता हुआ। पहले परिवर्तन के तौर पर बुलाए थे और अभी तक बहुत ज्यादा बेहतर नजर नहीं आए कपिल मेहरा ने। इस ओवर में अपनी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया है। 47 रन बोर्ड पे। एक और बार पर हवा में है और ये कैच पकड़ भी लिया है। एक बार तो बॉल फंबल हुई थी, ऐसा लगा था कि बॉल कहीं छिटक न जाए, और अपने आप को संतुलित किया, नियंत्रित किया और कैच पकड़ लिया है। कपिल मेहरा की पारी का अंत कर दिया है। विशाल का ओवर बड़ा हो रहा था, पर इस ओवर में एक सफलता भी मिली है और ये तीसरी कामयाबी मिलती है। 47 पर ये तीसरा विकेट गिरा है एचएसबीसी का। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। गेंदबाज ने कहा कि तरीके और भी हैं, इस तरह परखा नहीं जाता, चरागों को हवा के सामने रखा नहीं जाता। मोहब्बत फैसला करती है पहले चंद लम्हों में, जहां पे इश्क होता है वहां सोचा नहीं जाता। रन पड़े थे उनके खिलाफ जरूर, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। विकेट दिलाई है डेल। बढ़िया पावर प्ले घटा है। अगर आप देखें हर लिहाज से, पहले बल्लेबाजी करी थी जब डेल, तो पावर प्ले में 55 रन बनाए थे बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले में बहुत ही उम्दा शुरुआत मिली थी पहली पारी में भी, और दूसरी पारी में भी गेंदबाजों ने दिलाई है। अभी तक एचएसबीसी के लिए बहुत कुछ खास घटा नहीं है, पर उम्मीद बना के रखनी पड़ेगी और करना भी पड़ेगा। इस मुकाबले में बने रहने के लिए एक साझेदारी की जरूरत है। पहली पारी में जब आप बल्लेबाजी करते होते आपके पास पूरी स्वतंत्रता होती है, लेकिन जब आप दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हैं आपके ऊपर दबाव होता है, सामने लक्ष्य होता है, अपने विकेट को बचाना होता है, रन रेट को मेंटेन करना होता है, तो चुनौतियां काफी रहती हैं और इस चुनौती को जो स्वीकार करता है वही बड़ा खिलाड़ी बनता है। अभी तक 3 बल्लेबाज पवेलियन में जा चुके हैं। बता रहा हूँ, सुनिए। नए बल्लेबाज अंकुर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अगली बार कुछ पूछेगा ना और 500 को दूंगा। विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं। नए बल्लेबाज अंकुर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, फील्ड का मुआयना करते हुए। थोड़ा सा धैर्य दिखाने की जरूरत है। स्ट्राइक रोटेशन बेहतर होना बहुत जरूरी है। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर डाला जा रहा है विशाल के द्वारा। लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी है, कवर बाउंड्री पर एक खिलाड़ी। ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने के लिए गए थे, चूंकि गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में जाती हुई। विकेट की खुराक मिल चुकी है गेंदबाज विशाल को। विशाल के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता वापसी करने का, क्योंकि इस ओवर में काफी रन भी आए थे शुरू में। ये पैड लाइन पे गेंद, अच्छा शॉट खेला है, आसानी के साथ सिंगल लेने में कामयाब होते हुए ओवर समाप्त होता हुआ। पावर प्ले समाप्त हुआ है 6 के बाद 48, 3 विकेट के नुकसान पे। सही है। अगर आप दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे पहले 6 ओवर के खेल में, तो उनके 55 रन थे बिना किसी नुकसान के। इनके 6 ओवर में 48 से 3 विकेट के नुकसान पे हर लिहाज से पीछे नजर आ रहे हैं, रन के लिहाज से भी पीछे, और 3 विकेट भी गंवा दिए हैं। ये फर्क रहता है जब भी 150 के ऊपर T20 में स्कोर लक्ष्य का आप पीछा करने उतरते हैं, तो आपको अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत होती है। वो यहां पर मिली नहीं। पहला विकेट 16 पर गिरा, उसके बाद दूसरी विकेट भी जल्दी गंवा दी
मिहिर धवन गेंदबाजी आक्रमण पे नजर आ रहे हैं। मिहिर ने आज क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, एक फिनिशर की भूमिका में नजर आए आज के दिन। और मिहिर से जब इंटरव्यू के दौरान बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने टॉप ऑर्डर से लेकर ओपनिंग से लेकर यहां तक का सफर तय किया है और कप्तान ने शायद अब उन्हें फिनिशर की भूमिका में उन्हें बल्लेबाजी के लिए भेजा था और उस भूमिका में उन्होंने अपने हाथ को साबित भी किया है। 47 रन बनाए आज 19 गेंदों से, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के भी जड़े थे इन्होंने। अब गेंदबाजी में भी इनको कप्तान ने गेंद सौंप दी है। विकेट कीपर के अलावा शॉर्ट थर्ड मैन मिहिर धवन। और अब 30 गज दायरे के बाहर जो फील्ड प्लेसमेंट नजर आ रहा है, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन पर ऑफ साइड में, कवर बाउंड्री लाइन पर है और एक खिलाड़ी फाइन लेग की दिशा में, बल्कि मिड विकेट और स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है। ये पहली गेंद पैर से टकराई है, हल्की सी आ निकलती हुई और आउटफील्ड पे नजर डालेंगे। बहुत ही हरियाली, बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता हुआ यहां से। अभी तक 50 रन बने नहीं और ये हवा में झूलती हुई गेंद शॉर्ट फाइनल के खिलाड़ी से वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, आसानी के साथ एक रन नहीं बल्कि चौका मिला है, क्योंकि तेज आउटफील्ड है और इसी के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए 52 3 विकेट के नुकसान पे। अंकुर और नवनीत शर्मा की जोड़ी क्रीज पे है। नवनीत ने आज गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की थी, 4 ओवर में 27 रन देकर एक सफलता इनके नाम है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे नजर आते हुए। मिहिर की गेंद इस बार पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई, खेलने का इरादा जो था उसे बदला और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। नजदीकी क्षेत्र रक्षकों पे नजर डालें तो शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी को और आगे बुलाया है। इस बार जगह बनाते हुए स्ट्रोक खेलने की कोशिश, कामयाब नहीं हो पाए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मिहिर धवन, अच्छे टप्पे पर गेंद को डाल रहे हैं, बल्लेबाज को स्टेप आउट करके बाहर निकल के मारने के लिए प्रेरित करते हुए, और इसके लिए उन्होंने लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी को लगा रखा है, डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर बड़े शॉट के लिए खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन पे लगा रखा है मिहिर धवन ने। ये ऊपर डाली हुई गेंद, ये शॉर्ट गैप में है और मिलेंगे पूरे के पूरे 4 रन। पलक झपकती गेंद सीमा रेखा के बाहर। आप इस तरह की गलती करेंगे, बल्लेबाज को वो परख रहे थे और इसलिए उन्होंने कहा, बल्लेबाज ने कहा कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए मिहिर धवन ये अच्छी गेंद है, बढ़िया वापसी। और इस तरह की गलतियां करते हैं, बल्लेबाज को चेक करने की कोशिश करते हैं कि बल्लेबाज इस माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर समाप्त हुआ है, पारी के 7 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। स्कोर 56 रन 3 विकेट के नुकसान में। अगले ओवर में क्या कुछ होगा, माइक्रोफोन पर एक बार फिर से आराम फरमाने के बाद स्वागत है आपका मयूर जी। थैंक यू अनवर जी, आराम तो हमने फरमा लिया एंड आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ। अब हम जा रहे हैं एंड अभी यस 56 फॉर 2 for 3 for HSBC in 7 overs. They are chasing a target of 192 versus Dell. Quite been some happening since the first ball that we have seen here. They've
tried to steady the ship, but in the process they've also lost 3 wickets. On the full outside off stump, he was trying to drive that. Probably his eyes must have just popped out while trying to play it through the covers. Again, outside off stump, was trying to cut a little bit slower in the air this time. Again, that was an angle outside off stump. One fuller, one little touch, little shorter. Remains the same at 56 for 3. Cuts and cuts well. Catches the call. He could definitely hear, but the ball will go towards the boundary. Helps the legs and enough power generated on the boundary, on the ball towards the boundary for 4 runs. The score moves on to 60 for 3 in 7.3 overs. Suddenly you can see an influx of boundaries here for HSBC. Navneet Sharma 14 not out of equal number of deliveries, and that's and Ankur Anand is 9 not out of 8 deliveries. 2 dot deliveries and then a boundary. Flights it very, very well. Again, the temptation to hit the ball through the covers. But this time, again, he fails. It was exactly replica of the very first ball that Anurag Tomar bowled to the batsman, tantalizing the batsman to hit him through the covers. But manages to fail again. Dot, a boundary again, a dot. Anurag Tomar asking the bowler, asking the batsman to take the risky shot, but back foot is firmly on the ground. It's like a catching practice for the wicket keeper as of now. Here's Anuga Tomar again, fights the ball again. He tries to cut, a gentle appeal, but umpire Ashwini Sharma says you have to go back to your run-up to continue bowling, as there definitely didn't have any deflection in the ball. He has so many years of experience, Mr. Ashwani. He has the eye of a hawk. Yes, the next ball for Anurag, flies it well. And inside edge, a quick single, and he will complete it. And that will finish the over also. 8 overs have been bowled. HSBC are now 61 for 3. They're chasing a target of 192 versus Dell. Mayur Dhawan will continue his over. He has already bowled 1 over, no runs, no wickets for 8 runs. That's expensive as of now, but the captain has given his full confidence on him. And if the wickets keep on coming, there are runs to defend, all right. But T20 can be a very, very cruel game at the blink of an eye. Everything can just finish, and the moment you're trying to come back, plays it very well towards the man at long off, will just get a single. Coming back to the point of the T20 being a game where if you are not up to your toes and you don't have the spring in your steps, it will definitely be a failure from the very first ball. But these are 2 very big teams, Dell and HSBC. I'm sure they must have seen each other very many times in the previous editions. And the winning-losing ratio has been very competitive. Smashes very, very well down the ground, and that's half a dozen. Umpire signal is just a formality here. As soon as the ball hit the middle of the bat, that sound definitely signaled 6 runs all around the route, and the score is now 68 for 3.
in 8.2 overs, 50 balls for 68, and again the formality for the groundsman to bring the ball from ground number 2 to throw it back to ground number 1, whereas the match is being played. 7 runs already now in this over from Mihir Dhawan. Pressure on him. 1 run and then a 6. I'm sure the captain must be asking him to continue and to concentrate on just a single line and length to maintain one channel. This definitely it's easier said than done. The lefty inside again. Automatically you have 1 run and the righty in strike. Never been easy. Flights the ball outside off stump again. The temptation to hit the lofted drive manages. You can see all the 3 stumps have been exposed. He was definitely not there right to the pitch of the delivery. He was almost like falling back on the from where he was. The off stump again tries to cut this time a little full, a little bit foolish, a little bit quicker in the air from Mihir Dhawan. This is good bowling. Flight delivery again. The one ball which was right outside off stump. The wicketkeeper was up to his task. Score remains on 68 for 3. Next ball again, Fetter 1. This time again making the batsman dance to his tune. Ankur Anand is having little difficulty on his crease now. He's 15 not out of 12. But the last 3 deliveries have not been his up to his zone, probably up to not his comfortable standard. But Mihir Dhawan has done a fabulous job in his last 3 deliveries. And last 1 delivery remaining. Lights the ball little bit in the air. There is no protection on the onside, and that will help him to rotate the strike. The score moves on to 69 for 3 after the end of 9 overs. And now Anwar Siddiqui, my co-Hindi commentator, will take over the reins. Anwar, up to you. शुक्रिया महबूब। ओवर के बाद 69 विकेट के नुकसान से चेज करते वक्त विकेट 47 पर गिरा था। उसके बाद ये दोनों बल्लेबाजों ने एक बेहतरीन साझेदारी बनाने की कोशिश की है और यहां से ये कारवां आगे बढ़ता हुआ हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में एक अच्छा वातावरण। अंकुर आनंद अपनी बल्लेबाजी का आनंद उठाते हुए 16 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। नवनीत 16 के बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाज एक Vishal has the ball in his hand, and he had a very expensive over. 1 wicket, all right. 1 for 16 in his solitary 1 over for Vishal. Score is 69 for 3 in 9 overs. They definitely need a wicket. Here the man in green, Dell. 192 is the target. Here is Vishal. Not really excited, but it's in the air too. There's the fielder settling, and it's got him. 4th wicket down, and response immediately here from Vishal. He said, I've given 16 runs, no doubt, but I can give you the 2nd wicket also. 2 for 16 is his bowling figures, will what we say. But 4 wickets on the board. 4 wickets down for the man in orange and blue. Top edge again, and very well done for the fielder at covers. 69 for 4. Definitely not what the think tank was trying to repose on the batsman. But the answers as of now has been answered for Dell, for the man in green. And very important. And at the fall of this wicket, we'll have our drinks break.
हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मैक्स प्रोटीन के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ दीपक जी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। आपका स्वागत है दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग सीजन 11 के आज के इस मुकाबले में। कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद सर कि ये आप लोगों ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने ब्रांड को यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, और जो ये हमारा मैक्स प्रोटीन ब्रांड है बहुत ही लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है कि आजकल लोग टेस्ट के साथ साथ ना हेल्थ भी खोजते हैं, तो उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन है मैक्स प्रोटीन। और जो ये आपका कॉर्पोरेट लीग है, लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं कॉर्पोरेट से काफी एनर्जेटिक है और काफी मतलब इंतजारों के साथ भाग ले रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। आजकल दौड़ भाग भरी जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं होता और कम समय के अंदर ऐसी एनर्जी की चीजें खाना चाहते हैं जिससे वो एनर्जी लेवल भी बना रहे और एक नई ऊर्जा का संचार बना रहे। मैक्स प्रोटीन क्या इसी को लेकर के मैदान में आते हैं? हाँ तो देखिए, जो हमारा प्रोडक्ट है ना, इस तरीके का प्रोडक्ट है कि आप कहीं पे भी रनिंग में जाते समय या फिर कहीं पे भी कुछ भी आप कहीं जल्दी निकल रहे हैं, नाश्ता करने का टाइम नहीं है, तो जस्ट हैव ए कुकी, वो 10 ग्राम प्रोटीन और कंप्लीट ब्रेकफास्ट है। जस्ट हैव ए बार, वो आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट है। सो यू कैन टेक एज ए हेल्दी स्नैकिंग। हमारे पास प्रोडक्ट की काफी बड़ी रेंज है। वी हैव सम अराउंड 78 kind 29 bars. We have 6 different kind of cookies and we have some around 6 kind of chips also. Apart from that, we have some plant protein and whey proteins also. So there is a complete range of healthy snacking. So players या फिर डेली लाइफ में आप बड़े आराम से इसको यूज कर सकते हैं। देखिए आप सभी इस प्रोटीन का आप टेस्ट भी ले सकते हैं और अपने आप को हेल्थी बनाने के लिए इनके पास बहुत सारी क्वालिटी के प्रोडक्ट मौजूद है। उसका आप सेवन करके अपने आप को चुस्त दुरुस्त फिट रख सकते हैं और इसके लिए दीपक जी ने उसकी क्वालिटी उसकी गुणवत्ता को भी आपके सामने रखा है। यहाँ पर ओवरऑल कैसा लग रहा है? यहाँ पर जिस तरह का एनवायरनमेंट है पीसीएल को लेकर के क्या कहेंगे आप? सर ये आप लोगों ने काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि सारे कॉर्पोरेट्स को एक साथ लेके आए हैं और ये एक ब्रांड के तौर पे मैं देखूं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सारे कॉर्पोरेट्स एक साथ आ रहे हैं और हमें कुछ प्रमोट करने का मौका मिल रहा है। और जो ये आपका लीग है, होप सो मतलब बहुत अच्छा कर रहा है अभी तक और होप सो मतलब काफी अच्छा करेगा। ये 11वां सीजन है तो हमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कॉर्पोरेट लीग कैसा कर रहा है। सो ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये काफी अच्छा कर रहा है। मुझे भी यही आशा है कि ये टूर्नामेंट ये सीजन आपके लिए भी बेहतर होगा और ये वर्ष भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा और आपकी मार्केटिंग भी बढ़ेगी और हमारे साथ आप यूं ही ऐसे बने रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सर। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दीपक जी जो कि मैक्स प्रोटीन से थे। उन्होंने मैक्स प्रोटीन के बारे में आपको वो सारी बातें बताई हैं और चलते सीधा अपनी कमेंट्री टीम के साथ हमारे साथ मयूर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। Yes, sir. Thank you, Anwar. And back in action. And what did we have here? As soon as we were in back in action, the 5th wicket is down. Half of the side of HSBC is back in the pavilion. Kind of some kind of confusion in the middle. Actually, the batsman is a bit bemused, checking with the umpire. Don't know exactly what is it, but no complaints from the man in the grey and green as they celebrate the 5th wicket here for which has fallen down for HSBC. The score is now 70 for 5. 122 more runs required. This is enormous pressure here for HSBC. Not the right time to use the word momentum because as of now the momentum, the pedal, the accelerator, the driver's seat, everything belongs to the man in green, which is Dell. They have definitely managed to pick up wickets in regular intervals. And 4th wicket was down in last over, and now the 5th wicket down here. So why not? They would celebrate in huddle as they sip in some drink, get energized. Score is now 70 for 5.
I don't know the amount of the strength of more batsmen in repertoire for the man in blue and orange, HSBC. 122 more runs required. So much work to be done for them, but also have to be mindful of the fact that 5 wickets are down, and they have to not only play according to a strat, according to the merit of the delivery, but also have to keep the momentum in check in terms of runs flowing from the bat. And it's not easy. It's definitely not easy with the afternoon sun beating on you. It's just 12 past 10 past 10 minutes, but you already feel the afternoon heat. It's like I actually thought it's 2:30. The way it's beating up, it's hot, it's humid, and again you have the extra pressure of scoring 122 more runs versus a team which is doing so well with the ball. They have definitely come with a game plan, and they have a game plan to deliver. 70 for 5 as of now. We'll be back in live action very shortly. सही 4-5 क्वेश्चन अच्छे पूछते हैं सही उसको ज्यादा प्रेशर में आ गया उसको से इसके ज्यादा प्रोडक्ट लगा रहा है इसको ज्यादा पता है वो ज्यादा प्रेशर में आ गया तो 10 ओवर के बाद 70 विकेट के नुकसान पे वहां से आने वाली 60 गेंदें हैं और अभी भी 122 रन की दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। यहां से एक दृढ़ संकल्प, मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। आसानी से मिल जाएगा, उसकी अहमियत उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन जब मुश्किलों से लड़कर आपको मिले उसकी अहमियत भी रहती है और आप ज्यादा वक्त तक उसे याद भी रखते हैं। आने वाली 60 गेंदें शेष है, यानी कि 10 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। 70 रन 5 विकेट के नुकसान पे। तारीफ करनी होगी दिल के गेंदबाजों की, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। विशाल ने 3 सफलताएं हासिल की। शुरू के ओवर में अगर आप देखें, विशाल थोड़े से महंगे साबित हो रहे थे, पर एक बार जब उन्होंने विकेट लेने का सिलसिला शुरू किया तो रुकने का नाम नहीं लिया और 3 विकेट इनकी झोली में है। 2 ओवर में 17 रन 3 विकेट। इस बार प्रदीप और आकाश की जोड़ी अनुराग तोमर गेंदबाजी कर रहे हैं। आजकल एक चलन हो चला है, आप बल्लेबाजी करते हैं, आपको गेंदबाजी में भी महारत होनी चाहिए। आप गेंदबाजी करते हैं, आपको बल्लेबाजी करने की कला रखनी पड़ेगी, वो टीम को जरूरत पड़ती है। ये अच्छी गेंद है, बैट टू बैट साथ में लेते हुए रक्षात्मक तरीके से खेला। आपको तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं, ये भी ध्यान में रखना होगा। इस तरह से काम नहीं चलने वाला। हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट कीपर ने लंबी दौड़ लगाई है, छलांग लगा दी कैच पकड़ने के लिए। जानते ही ये मौके बार बार नहीं मिलते। कैच पकड़ा है और एक और विकेट का पतन हुआ है, 6ठे विकेट का पतन होता हुआ। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं होती। आपके मन में अगर भय है तो आप जीत कभी नहीं पा सकते। आपको अपने अंदर से वो भय का कीड़ा निकालना पड़ेगा, तब आप एचएसबीसी को जिताने की कोशिश में सफल हो पाएंगे। और जिस तरह से पिछली गेम पर भी इन्होंने डिफेंस किया था, इन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास किया था। और ये कहा जाता है कि जिंदा रहना है तो तुम खुद को मिटाना सीखो, घुट के मरते हैं सदा जान बचाने वाले। जीतने के लिए वो जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो, ऐसा खून चाहिए, आसमां भी आएगा जमीन पर जीत की वो गूंज चाहिए। वो गूंज दिखाई नहीं दी, सुनाई नहीं दी, उसी का नतीजा है। डेल इस वक्त ड्राइविंग सीट पे नजर आ रही है 71 6 विकेट के नुकसान पे।
एक के बाद एक बल्लेबाज आ रहे हैं और दूसरा जा रहा है और सब यही कह रहे हैं कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो उठाते जाते। 71 6 विकेट के नुकसान पे। कैच हवा में है तो हम तो देख रहे हैं यहाँ पर लाइव चल। ये गले की घंटी जो है बहुत ये अच्छा शॉट है। दो खिलाड़ी आ रहे हैं गेंद को उठाने के लिए। मिहिर ने गेंद उठाया है, फिर आज बल्लेबाजी में भी काम किया, गेंदबाजी में काम कर के दिखाया और अब फील्डिंग में भी बेहतर और तेज रफ्तार से हवाएं चल रही। काफी राहत मिलती है जब इस तरह की हवाएं चलती है, पर यहाँ पर राहत तो नहीं है एचएसबीसी के लिए। राहत को छीना है गेंदबाजों ने। 72 रन 6 विकेट के नुकसान पे अभी भी 120 रन की दरकार है मुकाबले को जीतने के लिए। पारी के 11वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है। ऑन साइड में गेंद को खेला, जितनी डॉट गेंदें होंगी उतना प्रेशर बढ़ेगा। खिलाड़ियों के भी दिलो दिमाग और जबान पर आ रही है मैक्स प्रोटीन, ऊर्जा का संचार नजर आया है। 11 ओवर के बाद 73 6 विकेट के नुकसान पे 54 गेंदें हैं, 119 रन की दरकार है मुकाबले को जीतने के लिए। मात्र 4 विकेट और शेष बचे हैं एचएसबीसी के पास। कप्तान तमोजीत आज जिन्होंने फैसला लिया था वो फैसला अभी तक सही साबित नहीं हुआ, चाहे पहले पारी में उनकी गेंदबाजी को देखा जाए या फिर दूसरी पारी में उनकी बल्लेबाजी को देखा जाए। हर एक विभाग में पीछे छोड़ा है डेल के खिलाड़ियों ने। सतीश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सतीश, प्रदीप कुमार और भास्कर, ये दो बल्लेबाज क्रीज में। सतीश की गेंद एक्स्ट्रा कवर पे गेंद को फील्ड कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद थी, ऐसी कमजोर गेंद पर भी आपको शॉट लगाने चाहिए क्योंकि जिंदगी एक मिली है, जब तक जियो पहचान छोड़ के जियो। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है और इस तरह से दिल के कप्तान को कोई परेशानी भी नहीं है। आप सिंगल से काम चला रहे हैं, सिंगल कब लेना चाहिए और लेते रहना चाहिए। हर चीज की अहमियत होती है, हर चीज का एक समय होता है। सिंगल की अहमियत हमेशा रहती है, पर उसके साथ में आपको अपने तेवर भी दिखाने होंगे, हाथ भी खोलने, बाजुओं को खोलना पड़ेगा। वापस एक और सिंगल लेने का मौका। एक एक दो दो रन से आप घड़े को भर सकते हैं। आपको बहुत मेहनत की जरूरत है और मुश्किल होता जा रहा है ये सफर। इस बार अच्छा कनेक्शन है पर खिलाड़ी टीम पे मौजूद है और कैच पकड़ भी लिया है और कैच छूटा है। खिलाड़ी गेंदबाज का सेलिब्रेशन देखने के बाद ऐसा लगा था कि कैच पकड़ लिया, लेकिन अंपायर के इशारे को देखा तो सब कुछ बदला नजर आया। पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है। ये क्रिकेट का खेल है साहब, ऐसे ही रंग बदलता है। 80 6 विकेट के नुकसान पे और ये शॉट है, ये कड़क है, ये झन्नाटेदार है, पर एक ही रन से काम चलाना पड़ेगा। कशिश मौजूद है, इनकी कोशिश गेंद को रोकने में कामयाब रही है, केवल एक से काम चलाना पड़ेगा। 81 6 विकेट के नुकसान पे एक एक दो दो रन के साथ अंतर कम किया जा रहा है। वो जीत की ललक अभी तक दिखाई नहीं दी। इस बार गेंद को कट करना चाहते थे, चूंकि ओवर समाप्त हुआ है।
सतीश मिंज का 12 के बाद 81 विकेट के नुकसान पे आने वाली 48 गेंदें शेष है जीतने के लिए। यहां से देखा जाए 111 रन की और जरूरत है। आने वाली 48 गेंदें 111 रन की जरूरत। अगले ओवर में क्या कुछ होगा एक बार फिर से वही स्वागत है। I can hear someone saying Rian Parag, yes. And the cheers, yes, and why not the smile? Rian Parag's team is doing so well here. Versus HSBC. Here's the next ball. Lights it well. Hits it very well. The flight was good. The shot was equally good. Towards the SG banner for 4 runs. The ball went back where it belonged to. And it doesn't belong to the paddy field. It doesn't belong to the paddy field, all right. But it can rest for a while among the straw, among the hay for a while, as we have another ball for action. But flat batted it from where it came from and played it disdainfully towards mid-wicket boundary for 4 runs. The score is now 85 for 6 for the HSBC. Trying to just square the fielder. A little bit uppish towards the umpire. Here's the next ball. Very wide. You don't have to see at the umpire that what it is actually. It's so wide that probably you can give 2 wides in one delivery. It was so wide. 86 for 6. Flies the ball on the outside. Hits well. Is there a fielder? No, it's half a dozen towards the max protein banner. For half a dozen. Score moves quickly up to 92 for 6. So runs come in thick and flow in this over from Anurag Thoma. Already 11 runs on the board. A wide, a 4, a 6. And they can definitely try and risk few bowlers. They have lost 6 wickets. Now he will try to bowl from round the wicket. Try and diminish the run flow. Flats bat, angles the bat towards the man at gully. Won't get any run. It's a dot ball. The score remains on 92 for 6. And 3 more deliveries now remaining from Anurag Thoma. Flights the ball well. Yorks himself. Yes and no. Did very well at a point. No runs. Communication is very important. You can see that the ball all right. But the non-striker, looking at the non-strike is also important sometimes when a ball goes past him. But dot ball, score remains on 92 for 6. Let's the ball again, around the wicket. But probably will steal a bye. This is a very good single. This is very good stealing of runs, I would say. And bye signal from umpire Ashwini. The score moves on to 93 for 6. And 1 legitimate delivery now remaining from Anurag Thoma. It's a lovely passage of play. Definitely need to hit and use the long handle, but have to be careful in the process. They've lost 6 wickets. Here is Anurag Thoma. Flights the ball on the outside, goes towards extra cover and onto the boundary. This is a very expensive over from Anurag Thoma and finishes with a boundary. Started with a boundary and finishes with a boundary as well. The score now moves on to 97 for 6. And this is a huge over, 97 for 6. कितना ओवर हो गया? कितना ओवर? I'll tell you the over. 13 overs. 13 overs have been bowled, 97 for 6. So 7 more overs remaining. It's going to be a very daunting task. More than 130 runs
Yeah, exactly 100 runs actually. Almost 95 to 96 more runs now required of 48 delivery or 42 deliveries. Unless until they have a good partnership, they can utilize the long handle. They can finish off the boundary. It plays it very, very well. You can hear the sound of the ball hitting the bat, but couldn't negate the fielder. You get a single, rotates the strike. Score moves on to 98 for 6. Next ball again. Bit slower in the air on the offside towards Gullian point. We get a single, rotates the strike. Score moves on to 99 for 6, just 1 run away from the triple figure mark for HSBC. 99 for 6, the tall, lanky right-hander Bhaskar on strike, 18 not out of 10. Gives himself room, it's in the air. The fielder underneath it, Kashish, takes it very, very well. He waits a little bit from the boundary rope, checking with his partner, but he did it very, very well. 7th wicket is down, 99 for 7. This is going to be very, very difficult now for HSBC. Not much of a batting now left. And the man in grey and green, they will celebrate against the run of play. He was trying to hit the lofted drive, but only into the safe hands of the player at long off. 99 for 7, and the captain Tomajit, he walks out. He has a huge task, and he'll definitely feel the burden on his shoulder. And to steal ahead the proceedings, I would spill over the mic to my co-Hindi commentator Anwar Siddiqui. He looks damn gorgeous now in front of the camera with his goggles and cap, and he will make you go through next proceedings. Over to you, Anwar. शुक्रिया मयूर। 99 पर 7वां विकेट गिर चुका है टीम HSBC का, और जिस शुरुआत की जरूरत थी वो मिली नहीं। उसके बाद लगातार अंतराल पर विकेटें गिरती रही। दिल के गेंदबाजों ने शिकंजा कस रखा है इस मुकाबले में, और अभी तक पीछे मुड़ के देखा नहीं है। इस मुकाबले में पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पे नजर आ रही है दिल। पहले बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से लेकर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने कमाल की पारी खेली, और अंत में अच्छा फिनिश किया था मिहिर धवन ने। उसके बाद गेंदबाजी की जब बारी आई, तुषार भाटिया ने वो कार्य किया जिसकी जरूरत थी टीम डेल को। अच्छी शुरुआत दिलाई। उसके बाद विशाल ने भी लगातार अंतराल पर विकेट चटकाए। सभी गेंदबाजों ने बहुत अच्छा इंपैक्ट डाला है इस मुकाबले में, और पूरी तरह से इस मुकाबले में पकड़ मजबूत बना ली। 3 विकेट की और जरूरत है। 99 पर 7 आने वाले ओवर्स की बात करें तो पारी के 14वें ओवर की गेंदबाजी की जा रही है। सतीश मिंज की गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पे गेंद टप्पा पड़ने के बाद नीचे रही। लोअर रिजेक्ट की बॉल, गेंद को खेला, कवर पॉइंट से गेंद को फील्ड किया जाए, सिंगल लेने का मौका है। 1-1-2 रन से आप केवल अंतर कम कर सकते हैं। जीत के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत है, और वो रुकने का नाम नहीं लेना चाहिए। निरंतर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। एक और अच्छी गेंद। दोनों बल्लेबाजों के जहन में भी बात यह शायद चल रही है कि लक्ष्य उनके पकड़ से बाहर जा रहा है, इसलिए अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। 101 रन 7 विकेट के नुकसान पे। दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग सीजन 11 का ये मुकाबला है। इस बार ऊपर डाली गेंद, खिलाड़ी मौजूद है, पर एक टप्पे के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस तरह से शॉट लगाते रहने की जरूरत थी। आप बीच बीच में एक लगाते हैं, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। ये कहा जाता है कि वक्त के साथ चलो या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।
वक्त पे पकड़ जिसकी मजबूत है, अच्छी है, उसके कदमों में सारा जहां होता है, पर यहां पर पकड़ से मुकाबला बाहर निकलता जा रहा है। ये चिंता का विषय है एचएसबीसी के लिए। और डेल का खेमा काफी खुश होगा जिस तरह का अब तक प्रदर्शन किया उनके खिलाड़ियों ने। मिहिर धवन एक बार फिर से गेंदबाजी आक्रमण पे नजर आते हुए। आज का दिन मिहिर के नाम रहा है अभी तक। इस खिलाड़ी ने जिस चीज को छुआ है वो सोने की तरह अपना कद ऊंचा किया है। जब बल्ले को पकड़ा था तो बल्लेबाजी में कमाल किया इस खिलाड़ी ने, गेंद को पकड़ा तो गेंदबाजी में कमाल किया, फील्डिंग करते वक्त भी इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। और एक बार फिर से एक और नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं। नए ओवर की पहली गेंद, बॉलर बैक ड्राइव किया है, एक रन लेने का मौका है बल्लेबाज के पास। तमोजीत तो प्रदीप कुमार की जोड़ी क्रीज में मौजूद है। 105 रन 7 विकेट के नुकसान पे। एक बार जब आप पीछे हो जाते हो आपको वापसी करना बहुत मुश्किल होता है। ये अच्छा शॉट है, इसी तरह के शॉट की जरूरत थी। देर आए हैं पर लगाया जरूर है। वो जानते हैं कि शौक को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिलें कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता। अगर यही कोशिशें शुरू से देखने को मिलती तो मैच का परिणाम उनके फेवर में जा सकता था, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। ये अच्छी गेंद है, जबरदस्त वापसी की है गेंदबाज मिहिर धवन ने। इस बार हवा में गेंद, एक और विकेट मिहिर धवन के नाम। मैंने पहले ही बताया कि आज का दिन इस खिलाड़ी के नाम रहा है। चाहे गेंदबाजी की बात करें चाहे बल्लेबाजी की बात करें, दोनों ही विभागों में इस खिलाड़ी ने अपनी छाप छोड़ी है। और कप्तान तमोजीत भी पवेलियन आते हुए 11 रन बनाए, 4 गेंदें खेली हैं तमोजीत ने। मिहिर धवन की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन आ रहे हैं। 8वें विकेट का पतन होता हुआ 112 रन। दो विकेट की और जरूरत है। लगातार हर विकेट का आनंद उठाया है अभी तक। और मिहिर धवन के नाम ये दूसरी कामयाबी है। इससे पहले भी एक सफलता हासिल की थी और अब ये भी कप्तान का विकेट चटकाया इन्होंने। मिहिर धवन ने पारी के 15वें ओवर की गेंदबाजी की जा रही है। इसके बाद 5 ओवर का खेल शेष रहेगा। 30 गेंदें आनी बाकी रहेंगी और चिंता का विषय एक विकेट भी हाथ में नहीं है और अभी काफी रन बनाने हैं। लगातार एक के बाद एक विकेट, ताश के पत्तों की मानिंद ये पारी बिखरती नजर आई है और कोई भी बल्लेबाज इस तरह का साहस नहीं दिखा पाया कि क्रीज में टिके रुके। इसीलिए कहते हैं ख्वाब और लक्ष्य में फर्क होता है। ख्वाब को पूरा करने के लिए बिना मेहनत की नींद और लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। है 112 रन बने, 8 विकेट के नुकसान पे 2 विकेट की और जरूरत है। मिहिर धवन के नाम दूसरी कामयाबी। के बल्ले का किनारा, क्या भाग्य का सहारा भी मिलेगा। जी हाँ, मिलेगा 4 रन। फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। किस्मत सबको मौका देती है, मेहनत सबको चौंका देती है। आज मेहनत की है काफी। मुकाबला धीरे धीरे हाथ से फिसलता जा रहा है पर हर एक बल्लेबाज के साथ एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है और जब बल्लेबाज आउट होता है तो मायूसी हाथ लगती है।
इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद आप लगा नहीं सकते। ये जितने रन भी बनाएंगे ये आपके खेमे को खुश जरूर कर सकते हैं लेग स्टंप के बाहर। हवा पे गेंद और यह लंबाई भी मिलेगी। शॉट को मिली है दूरी 6 की मंजूरी लॉन्ग रन के ऊपर से। अच्छा शॉट खेला है। ये अलग बात है मुकद्दर नहीं बदला अपना, एक ही दर पे रहे दर नहीं बदला अपना। मुकद्दर बदले ना बदले लेकिन कोशिशें जारी हैं बल्लेबाज की। 15 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 116 रन 8 विकेट के नुकसान पे। अगले ओवर में क्या कुछ होगा माइक्रोफोन पर एक बार फिर से मयूर स्वागत है। आकाश रोकिए एक मिनट। तुषार भाटिया सही। तुषार भाटिया भाई, सचिन भाई कमिंग, सचिन भाई। 116 for 8 in 15 overs for HSBC. सचिन भाई 116 नहीं है। अच्छा भैया लास्ट बॉल पे 6 था ना, उसकी जगह 0 लग गया गलती से, अब क्या करना है? अंडू नहीं हो रहा है। हेलो Will have to come back with the correct score. Nice wind blowing here at the official sports complex here in Noida. This is the Dafa News Pro Corporate League Season 11. We have one more match to be played on this in the same venue at ground number 1. Here's the next ball of the 16th over. Left arm in the air. The fielder charging in from gully, but this is not good through at all. There was no backing that will allow them to come for the second run. Really no awareness. The fielder was there for the throw, but there was just the umpire and the bowler was nowhere there in the contention. So that will allow them with the alertness to come back for the second run. We still have a technical difficulty, so we'll come back with the score very soon on the leg side. And it's bowled him! Yes, flying kisses from the bowler. And he needed it. That's a pretty sight for any fast bowler to see the stumps being rattled. He came down the wicket, tried to play on the leg side, but the ball had enough room to go between his bat and body and onto the stump to signal the death rattle. And another wicket for the man in blue and orange. But enough, and plenty of reasons. 9 reasons for the man in grey and green to celebrate. The man in Dell, they will have claps and handshakes all around. They'll definitely come in a huddle. They don't need much of a strategy now, as the last batsman will come in to walk to face the bowler. But the writing is almost on the wall for HSBC. Not been very good going here versus Dell. There was a very small partnership in the wickets kept on falling in regular intervals, and there was no breaks at all being applied by HSBC. But on the other hand, the man in grey and green, the Dell, they definitely did everything well in all departments, right from the batting, the bowling, the fielding has been good, the catching was very good, and that has definitely allowed them to come to the game very strongly. And the result is right in front of you. They just need one solitary wicket to put the final nail in the coffin and to seal the deal here versus the man in blue and orange, HSBC. Here is the next ball around the wicket, lefty with the breeze on the leg side. That will be a wide. 1 run extra added to the total for HSBC. Nice afternoon breeze blowing.
helping the bowler. But more for him, I think it will help us in our post-match presentation and on to the next match. Here is the next ball. Played on the leg side. Did very well. The batsman was almost half of his crease down. Probably he was not very much aware, the fielder, that he was down the crease. He could have thrown the ball back to the stumps. Here is the next ball. Bit on the leg side, help the ball towards a 5-leg boundary and onto a boundary for 4 runs. He definitely knew that the fielder was much squarer, and as soon as was onto his thighs, it just angled it towards the boundary for 4. Score is now 130 for 9, and they need more 62 runs of 4.2 deliveries, which is going to be very, very, very tough here. But this was easy picking here for the batsman onto his stumps, and he just had to help with his angle towards the boundary. Next ball onto leg side again, little officially played. There is protection to the sweeper cover, not towards the mid wicket. I beg your pardon. 1 run being taken. Score moves 131 for 9 for HSBC. 2 more legitimate, just 1 legitimate delivery now remaining from Tushar Bhatia. On the leg side again, defended very well. That will bring the end of the 16th over. The score remains on 131 for 9. Tough going here at PCL Sports Complex. This is Dafa News Pro Corporate League Season 11. Thank you to all the sponsors. Dafa News, our principal sponsor. V-Zone, our grooming partner, Grooming India, making everyone healthy and groomy. We have our KEI Wires, IFCO, and last but not the least, the white shining ball from SG. Here is the first ball from 70 over, lifts on the bat in the air, plays it gently through the covers. Gently will stroll for a single. The score moves to 132 for 5. 60 more runs required. Until unless there is some magic from this last wicket partnership, this match is well and safely in the hands of Dell versus HSBC. But until unless the last wicket is not done, we will still have our business in hand. Cricket is a very, very funny game. So not everything is sealed until the last ball is being bowled. Here's the next ball. Little bit shorter on the leg side. Played defensively towards the leg side. No run being taken. Score remains on 132 for 9. In the air, but will fall in no man's land. 1 bounce to the fielder at long off. Will get a single. Rotates the strike. They will definitely not mind the singles at all. Score moves on to 133 for 9. Flatter on the offside, hits it back to the bowler. Score is 133 for 9. In the air, fielder does it well, and he does it very, very well. He came charging in from long on, and he did very, very well to stop it with his foot, and resulting just 1 run. This is very good fielding. They just need 1 wicket, but what an effort for the fielder. It definitely motivates the whole team. Next ball, little bit flatter, and will not get Nisang. Misfield on the other end. Probably a comedy of errors which is happening. He'll again come back from the second. This is all happening. A single, there was actually no single in the offering, but they got a single off the misfield. Again a misfield from the wicket keeper, in resulting couple of runs for the team.
score is now 136 for 9 in 17 overs. Oh, off the bat. 3 more overs. Bat say. 3 more overs to be bowled here. Rahul Parasar. Strike Jatin. Rahul Parasar to bowl the 18th over. Played it on the full, attempted from the fielder at cover, but couldn't get his long arm extended. Will get a single, but this singles definitely won't help the cause of. It's still a long way to go. 192 is the target. Here's the second ball from the 18th over. Plays it well down the leg side. There is protection at deep mid wicket. Again, a single being taken, strike being rotated. Score is 138 for 9. They're trying to hit it far and wide, but the fielders are definitely spread. In the air, there is fielder. This could be the one. Oh, just evades his hand and onto the boundary for 4 runs. He was trying to put his hand, stress his arm, probably just hit his finger and onto the boundary for 4. We thought this might be the final nail in the coffin, but the batsman had some other ideas. He said you have to hang on for a bit. The score is now 142 for 9. 50 more runs required for HSBC. Outside off stump, plays it through the man towards 1 run towards the man at long off. 1 run. Score moves to 143. सचिन भाई ऊपर आना सचिन भाई 143 for 9. मैच खत्म हो गया मैच कंप्लीट 143 for 9. पेन दियो जरा पेन दियो पेन पेपर है आउट नहीं हुआ पता नहीं क्या दब गया इसमें डॉट बॉल He was trying to swing it and swing it very hard. Hands on head for the bowler. He definitely cannot believe how the ball has just missed the stumps. Probably just fraction away, and that will bring the end of the over. 144 for 9 after the end of the 18th overs. 2 more overs to be bowled. क्या हुआ ऑल आउट ये क्या हुआ And that's the deal for the man in green as the celebrator. Congratulations, Dell. You have done it very brilliantly here versus HSBC. But never mind, they can walk back with their head held high. They have done a very well the job that was required. But in the end, all smiles galore and customary handshakes between the fielder and the batsman. So the result is
Dell have won this match. We'll have to come back with the exact score with the margin of defeat. And the result is that Dell have won this match versus HSBC. हाँ वही देखना पड़ेगा. ये देखना है 1-1 करना है कि ऐसे रहेगा. कोई इनिंग्स अलग कुछ नहीं होता खटाक से अबे वो तो बता 3 बॉल अपडेट इधर क्यों नहीं आ रहे? जाओ ना बना रहे थे मजाक बना रखा है. बहुत टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है, टेढ़ा. अरे टॉस का बॉस पे बोल, अनाउंस करा. चलो भाई कहाँ गए दोनों कमेंटेटर? नीचे उतर गए यहाँ से तो. बहुत टेढ़ा है, इस साइड से आगे होगा थोड़ा सा. बोल दे उस पे क्यों वो करा रहा है? मैं क्या बोलूं, मेरे पे थोड़ी ना माइक. टॉस का बॉस बोल दो ना, आ जाएंगे तो. मैट लाइफ के 8 ही प्लेयर दिखा रहे हैं. मैंने कर दी पूरे ऐड. ये लो. मर्सर और मेटलाइफ के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए दूसरे मुकाबले के लिए. मर्सर वर्सेस मेटलाइफ. मर्सर के कैप्टन और मेटलाइफ के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए. और इधर एचएसबीसी दिल के कैप्टन से रिक्वेस्ट अपनी टीम के साथ क्लोजिंग सेरेमनी के लिए आ जाए. एचएसबीसी दिल पूरे टीम के कैप्टन अपने खिलाड़ियों के साथ क्लोजिंग एरिया में आ जाए. और इसी मैच की लाइव पे टॉस दिखाऊं. हाँ हाँ तो दिखाना. अलग ही दिखते सचिन भी जाएगा. Thank you for charging. कैप्टन मेटलाइफ दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग सीजन 11 दूसरा मुकाबला मर्सर वर्सेस मेटलाइफ के बीच शुरू होने वाला है. दोनों टीम के कप्तान इस वक्त पिच में पहुंचे. टॉस की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. सिक्का उछाले जाने की तैयारी है. तैयार है. हमारे साथ हमारे लेफ्ट में मर्सर के कैप्टन चाहत और हमारे राइट में राकेश मेटलाइफ के कैप्टन है. और इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर सचिन गुप्ता के साथ सिक्के उछाले जाने की तैयारी है. इधर देखो सामने की साइड. रीजन टॉस का बॉस कौन बनेगा इस वक्त सिक्के उछाले जाने की तैयारी है. मेटलाइफ के कैप्टन राकेश कॉल करेंगे. हेड्स कॉल की है इन्होंने और टॉस के बॉस बने हैं. रीजन टॉस के बॉस बने हैं राकेश. बहुत बहुत मुबारक रीजन टॉस के बॉस बनने के लिए. क्या क्या फैसला लेंगे? टॉस जीती है आपने, बल्लेबाजी करेंगे. अरे छोड़ो ना, क्या सभी को देख रहे हैं आप. कितना स्कोर इस पे देख रहे हैं आप? कंट्रोवर्सी होती है ना. अरे नहीं होगी, जब जो बोले वही कर देना.
और अब आपने बोल दिया ना तो इसी मैच में होगी, सोच लो। जितना बना उतना कम है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि आउट होंगे, इसलिए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। सुपर सब बता देंगे टॉस में। ये रीजन है आप टाइम में फील्डिंग करनी थोड़ा सा टफ हो जाएगा तो इस वक्त राकेश ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हमारे साथ चाहत है। चाहत आपको पहले गेंदबाजी करने का मौका, आपको चेस करने का मौका मिलेगा। कितने इसको रोकने की कोशिश कर रही है, ये काफी ड्राई विकेट नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ड्राई विकेट लग रहा है। अभी देखेंगे कैसा गेम चलता है। कुछ दिमाग में ऐसा कुछ सेट नहीं है कि कितना टोटल रहेगा हमारे लिए, बट जितना कम रहे उतना अच्छा रहेगा। लास्ट मैच का रिजल्ट आपने देखा है, 191 बनाई थी डेल ने पहले बल्लेबाजी करती, वह मॉर्निंग का वक्त था और अब आफ्टर नून में ये मुकाबला जा रहा है, तो विकेट भी ड्राई है, तो कितने पे रोकने की कोशिश रहेगी? देखते हैं कैसे जाता है। 150 160 मोस्ट प्रोबेबली, उससे भी कम, मतलब जितना कम हो सकता है उतना कोशिश करेंगे, बट लेट्स सी हाउ द विकेट प्लेज। आई डोंट थिंक इतना ज्यादा अच्छा खेलेगा। मॉर्निंग विकेट ज्यादा अच्छा होता है, अभी थोड़ा स्लो हो गया है। विल सी। आपके लिए पहला मुकाबला है? ये सेकंड मुकाबला है। अभी आपने पहला मुकाबला भी खेला है, सेकंड मुकाबला चल रहा है, होने वाला है, तो इस मुकाबले को लेकर कितने एक्साइटेड है आप? सेम एनर्जी, सेम एंथुसियाज्म है जो फर्स्ट में था, वही इसी में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत टॉस के बॉस बने हैं रिजॉन, टॉस के बॉस बने हैं राकेश, मेटलाइफ के कैप्टन। इस वक्त आप देख सकते हैं ऑफिशियल ग्रूमिंग पार्टनर रिजॉन, टॉस के बॉस। तो आइए चलते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में, जहां पर डेल और एचएसबीसी की टीमें आज के पहले मुकाबले में खेली। एक तरफ डेल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने भी शानदार बल्लेबाजी की और फिर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने वो काम किया जिसके लिए जरूरती अंक में फिनिश किया। मिहिर धवन ने आज के पहले मुकाबले में मिहिर धवन ने शानदार बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में कमाल किया और में एक बड़े मार्जिन से मुकाबला जीता है डेल ने। दोनों टीमों के कप्तान से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीम के साथ क्लोजिंग सेरेमनी के लिए क्लोजिंग एरिया में आ जाएं। कैप्टन डेल, कैप्टन एचएसबीसी तमोजीत एंड अनुराग। आ जाए भाई। डेल एचएसबीसी के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, प्लीज आ जाए आप। एचएसबीसी के कैप्टन से रिक्वेस्ट, अपनी टीम के साथ आ जाए जल्दी से। वेलकम वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग के आज के पहले मुकाबले में। डेल वर्सेज एचएसबीसी के बीच मुकाबला हुआ, टॉस जीता, टॉस के बॉस बने एचएसबीसी के कप्तान तमोजीत और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के मिले निमंत्रण पर बल्लेबाजी करने उतरी डेल की शुरुआत बहुत अच्छी रही। पहले विकेट की साझेदारी में अर्धशतक की साझेदारी दोनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने उनका शुरुआत दी रही। उसके बाद मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने अनुराग ने शानदार बल्लेबाजी की, 28 रन बनाए और अंत में मिहिर धवन ने शानदार 47, उनके साथी ने 17 रन बनाकर नाबाद रहे। निर्धारित 20 ओवर में 191 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। गेंदबाजी में नवनीत शर्मा ने सबसे किफायती गेंदबाजी की, 4 ओवर में 27 रन देकर एक सफलता और उसके अलावा
2 विकेट चटकाए थे कपिल मेहरा ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने शुरुआत के 2 विकेट चटकाए और इस तरीके से 192 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी एचएसबीसी की। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, पहला विकेट 16 की रन संख्या पर, उसके बाद लगातार विकेट अंतराल पर गिरती रही और अंत में पूरी टीम 100 के पार पहुंचने में कामयाब रही। बड़े मार्जिन से मुकाबला डेल ने जीता है। आज का पहला अवार्ड है विजन मैक्सिमम सिक्सेस। सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं मिहिर धवन ने, 4 छक्के लगाए। मैक्सिमम सिक्सेस का अवार्ड विजन मैक्सिमम सिक्सेस अवार्ड मिहिर धवन। नेक्स्ट अवार्ड इसको सेफेस्ट प्लेयर ऑफ हैंड्स और ये अवार्ड जाता है विकेट कीपर अनुराग को। जोरदार अमन मीना को। नेक्स्ट अवार्ड विजन कूलेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच, ये अवार्ड जाता है तुषार भाटिया को। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को तुषार भाटिया, इन्होंने बहुत ही कूल काम रहते हुए अपनी गेंदबाजी से अच्छी शुरुआत दिलाई दिल को। और तुषार भाटिया विजन कूलेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच। नेक्स्ट अवार्ड केईआई इंपैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच अनुराग तोमर, 28 रन और 23 रन देकर 3 विकेट इन्होंने चटकाए। कैप्टन अनुराग तोमर। विशाल प्लीज। नेक्स्ट अवार्ड मैक्स प्रोटीन पावर पैक परफॉर्मेंस, यह अवार्ड जाता है नवनीत शर्मा को, एचएसबीसी। 16 रन 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट इन्होंने हासिल की। नेक्स्ट अवार्ड एसजी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच विजन पावर पैक परफॉर्मेंस, एक बार फिर से नवनीत शर्मा। नेक्स्ट अवार्ड एसजी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच मिहिर धवन, जोरदार तालियों के बीच 47 रन 19 गेंदें 3 चौके 4 छक्के लगाए।
award Vision Most Valuable Player of the Match. Miller Dhawan. Next and last, Mihir Dafa News Most Valuable Player of the Match. Mihir Dhawan एक बार फिर से. Max Protein Player of the Match. Mihir Dhawan. Dafa News Most Valuable Player of the Match. Mihir Dhawan. Max Protein Most Valuable Player of the Match. Mihir Dhawan. मेरा आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज के इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने और आपके खिलाड़ी हैरत में है, इतने सारे अवार्ड मिहिर के नाम जा रहे हैं. इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, इनको विश्वास नहीं हो रहा तो अगले मैच में फिर प्रूव करके दिखाऊंगा. ये तो अभी शुरुआत है. बिल्कुल बिल्कुल. कैसा लग रहा है यहाँ पर, कैसी फीलिंग आ रही है इस टूर्नामेंट में खेल करके 11th एडिशन में? सर टू बी ऑनेस्ट मेरा ये 6th या 7th एडिशन है. मैं 2018 से ये टूर्नामेंट खेल रहा हूँ. पहले दूसरी टीम से खेल रहा था, अब 3 साल डेल के साथ हो गए खेलते हुए. तो ये टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड हमेशा से अच्छा रहा है और अभी और बेटर होते जा रहा है. और इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बनना और आपके प्रदर्शन, आपकी परफॉर्मेंस से सारे खुश भी हैं और अगले मुकाबले में भी आप उसको दोहराने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली मैं फिर से दोहराने की कोशिश करूंगा. आप बल्लेबाजी में आज एंजॉय किया, हालांकि बल्लेबाजी करते वक्त तो सभी ने कोशिशें की लेकिन बड़ी पारी किसी ने नहीं खेली. आपने 47 बनाए और शतक के करीब थे आप. हाँ जी सर, मैंने स्टार्टिंग में जाके पहले विकेट को एनालाइज किया, उसके बाद जब आखिरी 3 ओवर बचे थे तो मैं बड़े शॉट्स के लिए गया और वो एग्जीक्यूट हो गए. चलिए उम्मीद करते हैं आपकी परफॉर्मेंस ऐसे ही जारी रहेगी और आपकी टीम इस अभियान को जारी रखेगी. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. कैप्टन अनुराग, कैप्टन कैसी फीलिंग आ रही है? कैप्टन आपकी टीम इस मुकाबले में बड़े अच्छे अंदाज में जीती है. आपके बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, गेंदबाजी में तुषार ने बहुत अच्छा स्पेल डाला, विशाल ने बढ़िया बॉलिंग की, ओवरऑल सभी ने गेंदबाजी अच्छी की. आई थिंक हम लोग को स्टार्ट बहुत अच्छा मिला, सो थैंक्स टू नवीन एंड संचित. उन लोगों की वजह से वी वर कैपिटलाइजिंग द पावर प्ले और उसके बाद हमने मिडिल ओवर्स में गेम को चलाया, विकेट लूज नहीं किए और एंड में उसको अच्छा फिनिश दिया मिहिर ने. तो इन टोटल इट वाज अ पावर पैक बैटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर टीम एंड इन द bowling section as well. I would say Tushar Bhatia started really well. On fielding में we never dropped any chance, so that was kudos to my team. तुषार ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की और विशाल ने भी मिडिल ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की. उसकी वजह से आपकी टीम ने लगातार विकेट चटकाते रहा, अंत में रिजल्ट आपके सामने. Exactly, yes. चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद करते हैं आपका यूं ही साथ मिलता रहेगा और टीम आपकी प्रदर्शन अच्छा करती रहेगी. थैंक यू सो मच.